The 5 days workshop on research and data analysis. This workshop aims to provide you with valuable insights and practical skills in conducting research and analyzing data effectively. This workshop will equip you with the necessary tools and knowledge to undertake rigorous research and make informed decisions based on data. The world today is driven by data, and the ability to extract meaningful information from it is crucial for making evidence-based decisions. However, research and data analysis can be complex and challenging without the right guidance. This workshop is designed to explain the process and help you navigate through the various stages of research, including data collection, analysis, interpretation, and presentation. Through interactive session, practical exercise, and case studies, you can apply the concepts and the technique learned during the workshop. Our experienced resource persons will guide you through the hands-on exercise with popular research and data analysis tools such as Excel, Stata, and SPSS, depending upon the workshop day's focus and the needs of the industry. By the end of this workshop, you will have a solid foundation in research principles and data analysis techniques, allowing you to approach research projects with confidence and competence. You will also gain the insight into best practices for presenting research findings and communicating data effectively. Let's embark on the enriching workshop together. I'll invite the program director for this workshop, Professor Dr. Kavita Indapurkar, who is presently heading the Institute Amity School of Economics and is a professor. Her research interest at the crossroads of behavioral aspects of people, whether it is about how they formulate inflationary expectation or how they decide to plan their retirement, or how artistic logic lead to the economic dilemma among the artists. Madam is a keen researcher and a teacher par excellence, and under her able leadership, we have hosted this workshop for the passing out student, so that no corner left unturned to make the students industry ready. I welcome you, ma'am. Thank you, Pooja, for these kind words, and they keep us motivated. Thank you, and first of all, I would like to welcome each and every one over here. My dear Dr. Trisha, can please start her camera so that I can see her also, and welcome her. And I welcome all the students of Amity School of Economics who are the passing out batch. Hello, Trisha, who are the passing out batch. And I know that we have, kind of given you a lot of exposure to research. Either it is about methodology, or it is about econometrics, or it is about statistics. Madam herself, Pooja, has taught you statistics, and she has guided you through your NTCCs also. But always there is a scope. When you read a subject as a subject to give exams, it is different. And when you are going out to use that knowledge in practical, we feel that there is a different aspect, and also your will to take that knowledge and that guidance also becomes different. So when you are at the crossroads of leaving the portals of Amity University, as Pooja said, we do not want to leave any stones unturned before you kind of start your journey. And so therefore this workshop, and this is under the able guidance of our Honorable VC Madam, that we are able to think of such innovative ideas where we can make our students industry ready. So I take this opportunity to take the blessings from our Honorable Founder President Sir, our Honorable and Dynamic Chancellor Sir, and Honorable VC Ma'am, so that we accomplish this workshop with the objective that we have. So with these words, I would like to welcome Trisha, who is very dear to me, a very ardent researcher, a very ardent reader, and a wonderful teacher.
She is teaching in Delhi University for last, I think, 11 or 12 years. I know her since 6 years. Last 6 years, I know her very well. And we have been exchanging our research ideas since then. And she is an expert in various statistical tools and techniques also. And I would like Trisha to take, in our next, in our coming years, she may also take up some of the tools that she used in her research. But today we have invited her to talk about the research methodology. So any tool is of no use if we do not know why it is used in the first place, and what what is the benefit of that tool. And also, along with knowing the benefits, we should also know the limitations of the tool, so that we are in a better position to find out the limitations of our study so that we can improve upon it further. So with the objective of making students industry ready, this workshop is initiated. Therefore, the research methodology is the primary kind of what I should say, the base on which the whole building of research will be developed. In all your organizations, I'm sure I have seen many students who have come back to us and talked about their research experiences. They all have always said that, in industry, you will be always trained about a particular tool. You may be trained about a particular, statistical method, or any software, but nobody tells you that methodology or that conceptual framework which is primary in any research. And you will not reach to any conclusions if that primary basic framework for research is not made. So therefore, research methodology is something which can only be delivered over here. Otherwise, all your project directors, your team leaders, they will not be able to do it. You will have to do it on your own, so that you will be in a position to give suggestions at the end, come with certain policy, policy initiatives, or you will be able to, deliver well to your client. So it is of primary importance. That is what I feel. And as I have already guided almost all the students sitting over here about the research methodology, I would like Trisha to take this up in a way which is which helps the students to understand this with respect to the industry. So I welcome Trisha, and thank you in the first place for accepting our invitation at a very short notice. Thank you so much. Thank you so much, ma'am, for such kind words. This is an opportunity for me also to understand, learn in a group kind of a study. So it is more like a fishbowl situation wherein everybody is learning from everybody else. And I think I should start directly. So all these. Yes. Dr. Trisha, you may continue. So all these are graduating students, undergrad, right? Yes. Okay. No. It's undergrad as well as postgrad. The passing out batch. Graduating students, and most of the students get the opportunity of going into research organizations. Okay. So, all right. So I would like to introduce myself again. I am Trisha. I have been teaching with Janki Devi Memorial College, University of Delhi in Economics Department for last 11 years. And I have done my PhD under the able guidance of Dr. Kavita Inderpurkar and Dr. Ela Patnaik, NIPFP. So my research topic was inflationary expectations. So we actually worked on how the inflationary expectations are formed. This was just to give a brief about my background. Now I'll just directly come to the point, since these students today, they are already too much loaded with a lot of PPTs, a lot of
teaching material. So I would want to beat the conventional way of taking the PPT, and I would want to make the session interactive. Is that fine, Dr. Mehra? Very apt, because these students have the background of all these things, but we just want to make them inculcate everything so that they can be more on the application side. All right, okay, perfect. So I would want to beat the PPT. I would not open any PPT and bore you people with going through the PPT, and I would want to make it interactive. But for that, I need students also to be interactive with me and answer now here and there. So before I start, let's see how attentive you people are. Can somebody please, can they type in the chat box, ma'am? Yes, they cannot unmute because the session is for that's okay. host, That's okay. but That's they okay. can I just type want in the them. chat. I just want them to chat. Okay. So I would take up different steps. So there are 10 steps of research studies. So whenever we take up any project, there are 10 different areas which we go through, and 10 different things that we have to take care of. It starts with identification of the problem, identification of the brief area, then it goes on formulating your research study, the title for your research study, then it goes on to review of literature. So let's see how attentive you people are. Can you people please write in the chat box how many steps did I mention? Yes. Okay, so quite a few of them are there. Okay, chalo, let's begin. So since you people have the background of research, let's see how do we actually take up a research. I'll explain my whole session taking an example. Say I am interested in finding out the state of women in India. So because we know that there has been gender disparity in the economy, all in our conventional history. So I wish to figure out how women have done over the period of time, and what is the situation now? So what is the status today? So if I wish to figure out what is the status of women today, so the first thing I already am aware of is that I'm interested in macroeconomics. So the first thing that I need to know as a researcher is the area where I am researching, or is the area where I would want to work on. So the first thing is a broad area. So I know that I would want to work on macroeconomics, targeting on the woman. So the first pointer in my research study. So whenever we start with the research study, what do? We keep having a checklist. So we have an Excel sheet. We keep putting, there are obviously more advanced softwares also to do that, but I will go the very basic way. So we have a checklist in our Excel. We keep mentioning what all are we doing. So the first checklist is that I would want to work on women. I would want to work on macroeconomics. So any research should have a rationale. तो अगर मेरे को वुमेन पे काम करना है, तो मुझे वुमेन पे काम क्यों करना है? मुझे वुमेन पे काम इसलिए करना है क्योंकि there has been a gender disparity. So I need to illustrate that fact that working on women is very, very, very important. तो उसके लिए मुझे एक रिव्यू करना जरूरी है. तो फर्स्ट पॉइंटर जेंडर डिस्पैरिटी. सेकेंड पॉइंटर मुझे मैक्रो इकोनॉमिक्स पे काम करना था, वुमेन पे काम करना था. सेकेंड, रिव्यू ऑफ लिटरेचर. रिव्यू ऑफ लिटरेचर में मैं क्या करूंगी? मैं ये देखूंगी कि ऑलरेडी वुमेन पे कितना काम हुआ है, ऑलरेडी वुमेन पे किस डायरेक्शन में काम हुआ है. So if we take women as an example, so for whatever studies I've done, there's a lot of work or illustrating that women has not been doing well in terms of wages, in terms of the role that they are given in their workplaces, in terms of the decision making in the house, in the household sector, in terms of maybe income that they're generating, in terms of their empowerment, in terms of say suppose their placement in the hierarchy of the society. So all this is there. How do I know all this is there? I know all this is there because I've done review of literature. So with review of literature, मेरे को 3 चीजें पता चलेंगी. Already existing क्या है,
उस existing में कोई problem है, या तो मैं existing facts and figures से agree करूंगी, या फिर मैं existing facts and figures से disagree करूंगी. तो मेरा research या तो extend करेगा existing research को, or my research is going to contradict. And whenever I am contradicting an existing research paper, existing research work, existing research book, existing research area, then I need to provide the solution. Say I'm saying that women in Rajasthan, they are getting married at the age of 14. I don't agree that it should be done. There's a work which illustrates that it should be done in that area. And I disagree that we don't believe that women should get married at that age. So what is the solution? So first thing is problem identification. So with review of literature, you get problem identification. Can anyone please write down in the chat box what all have I covered so far? What are the 3 things that you will identify from review of literature? What are the 3 things? Guys, please be interactive. Yes. I do this a lot at my workplace already. Going for a lecture and not doing anything. Not getting any response. Identification. Someone has written problem identification. Identification, research, extending or contradicting. Okay. What already exists. Previous study. Kavita ma'am, you are not allowed. Sorry. Okay. Okay. I can't teach my teacher. Okay. So once I'm identified what's already there. Okay. Thank you so much, Sneha. It was a pretty illustrative answer. So once I've identified what is the problem area, once I've identified what are the 3 areas where we could work with, I need to finalize my title. Now, a tip whenever you're going to apply for a research project, whenever you're going to apply for a PhD, whenever you're going to apply for any sort of research, a paper maybe. Now, what editors do, they have piles and piles of research work with them, which they would want to edit, which have been proposed for editing or for publishing. So whenever you go and apply for a research paper to be published, do not go for something that has been worked upon for ages, or do not go for anything which has been worked upon continuously in last 2 years. Say, for example, today, if you submit your paper on COVID-19 in any good journal, they're not interested, because every alternative researcher is just working on COVID-19. So they're not interested. Go for find a midway out. Go for something which has not yet been explored, one, and also something which has its roots. So if I'm talking, say, for example, I was thinking of writing this paper on impact of Russia-Ukraine war on inflationary expectations. So now I have substantial research background wherein I can substantiate that with wars, people have their anticipation about prices. So there is a correlation over there that people are going to inculcate the changes in the external environment while they formulate their prices. But at the same time, there is not much work being done on Russia-Ukraine war and inflationary expectations in India. So whenever you decide for a research topic, go for a topic which is a midway out. So there is a substantial research behind it, but at the same time, it has not been done by every researcher in every field. Say for COVID-19, as an example, no offense to anyone, for COVID-19 as an example, your psychology department is also doing research on COVID-19. Your sciences are also doing research on COVID-19. Your political science is also doing research on COVID-19. Now, as an economist, you also start doing research on COVID-19. So everybody is working on the same topic. Think from the editor's point of view.
he would have to take into account different dimensions. So he is also bored of reading through the same thing time and again, time and again. Think from the research project, funding agency. Why would they want to fund you? You have more competition to deal with, right? So whenever you decide for a research topic, go for a research topic that is unique, but it has its roots. Second thing, whenever you're going for a topic, just make a very substantial, heavy rationale for the topic. Whenever you jot down rationale for the topic, the observer should get that feel that if this is not being done, if this is not being funded, it is the end of the world. अगर इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन पे काम नहीं हुआ तो इन्फ्लेशन टैप ही नहीं हो पाएगी. क्यों नहीं हो पाएगी? It has to have that substance. It has to have that belief. It has to have that weight that whatever you're doing is very important. अगर वुमेन के स्टेटस को स्टडी नहीं किया तो हमारी इकोनॉमी ग्रो ही नहीं कर रही. मे बी ग्रो कर रही हो पर डेवलप नहीं कर रही है. अगर डेवलपमेंट को केटर करना है किसी भी इकोनॉमी को तो उसको सारे जेंडर्स को देखना पड़ेगा. अगर मैं सारे जेंडर्स के बारे में बात कर रही हूँ तो जेंडर के हर एस्पेक्ट को देखना पड़ेगा. So while I am finalizing my title comes later. There should be a rationale, and that rationale should be a substantiate rationale with a weight. कि ये नहीं हुआ तो दुनिया खत्म ही हो जाएगी. ये तो करना ही पड़ेगा. Why? Because as economists, what is our ultimate objective? Our ultimate objective is to plan the economy. What is the basic definition of an economy? What is the basic definition of economics as a science or economics as a study? What is economics all about? So I'll just brush up your basic concepts. So economics is a study of making choices in presence of scarcity. तो हम सबके डिमांड्स, डिजायर्स, चॉइसेस बहुत ज्यादा हैं, बट हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो बहुत लिमिटेड है. तो हमें क्या करना है? हमें प्लान करना है, हमें अपने आप को चैनलाइज करना है, अपने रिसोर्सेज को चैनलाइज करना है कि हम अपने ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव्स को फुल कर पाए विद द गिवन लिमिटेड रिसोर्सेज. तो वो हम कैसे करने वाले हैं? वो हम ऐसे करने वाले हैं कि हम प्लानिंग करने वाले हैं. तो हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है प्लानिंग पर्सपेक्टिव. तो हमें हमेशा पॉलिसी पर्सपेक्टिव देना है एज अ रिसर्चर. हमारी हर पॉलिसी, इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर इकोनॉमिक्स रिसर्चर, आपकी हर रिसर्च के एंड में कोई पॉलिसी पर्सपेक्टिव होना चाहिए. अगर आपके रिसर्च कोई पॉलिसी सजेस्ट नहीं कर सकती, एग्जिस्टिंग पॉलिसी को सपोर्ट नहीं कर सकती, एग्जिस्टिंग या कोई नई पॉलिसी सजेस्ट नहीं कर सकती, कोई चेंजेस सजेस्ट नहीं कर सकती, तो आपकी पॉलिसी, आपका जो रिसर्च है उसका सब्सटेंस कम हो जाता है. एज एन इकोनॉमिस्ट आप कोई भी रिसर्च कर रहे हो उसका कोई पॉलिसी पर्सपेक्टिव होना चाहिए कि ये तो गवर्नमेंट को करना चाहिए. दिस इज अ सजेशन दैट यू आर मेकिंग टू द गवर्नमेंट टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज. दिस इज अ सजेशन यू आर मेकिंग टू अ local body to bring about this change. It could be as small as a suggestion to the university. So I had a research project with my students which talked about whether Virat Kohli having a captain has an impact on people's sentiments about cricket. So it was a very small project, done at a very micro level, funded by the college. So we had the participants also only from the graduation from the university. So it could be that micro, but it should still have a policy. So even the last bottom line of that research was also to do with the captainship rule. Okay. So as a researcher, whenever you decide for a title, there has to be three things that need to be kept in mind. The rationale, very important. The title, which should be not something which is very worked upon, but having a root, a unique, but having a root. And thirdly, and most importantly, what policy perspectives or what policy suggestions are you going to make from that particular research work? So that's your step 2. Any doubts over there? Anything you want me to discuss over here?
Any questions? Okay. So no answer is a good answer. I would hope, and I would want to believe that, because there are only two ways when there are no questions. Either you understand everything or you don't understand anything. I would want to believe that you understood everything. No, Dr. Trish, you are doing in a very, very interesting way, very interactive way. I hope because students have gone through the basic of research from the books perspective, but taking a real-time example and giving them the gist that how they need to work upon. This is, I think, the students are getting. And I also understand that students have been woken up in the morning to attend a session online, and they've been asked to be glued on the screens. So I totally get that they are not that interested, but I would request you people to just listen. Maybe it helps somewhere here and there. They are it always helps. Chat box also. Yeah, so since some of them are responding, so I would want to believe that everybody, we are all on the same page. All right, so let's move on. So this was about how you identify your problem. So now I have identified that I would want to work on the women studies. I would want to know the status of women. Now the third thing which comes, another next checkbox, the third thing that comes is a variable I would want to take up. Now, what all variables I would want to take up? Now, every variable should have a review. Every variable should have a rationale. Every variable should have some sort of knitting in my equation. So the variables, there are three variables I would want to take up. The education level of women, then the income that women are earning, third, the status, their role in the decision making. So what I am trying to say over here is that I'm trying to have a regression equation wherein I'm saying that the status of women is dependent upon three things. One, whether they're educated or not. If educated, what level of education they are on. Two, what is the income that they're generating. Three, what is their role in the household decision making. Now understand, I would want to explain what rationale do I have for all these three variables. One, education. It is pretty much obvious that education opens your thinking direction. Education does not mean going through your books. Education does not mean going through your literature. Education does not mean going through whatever has been written by some other author. Education means providing you a potential to think out of the box, to expand your thinking horizon, to make you capable of having a thinking perspective. Okay. So when women are being educated, they know their rights. When women are being educated, they know the difference between right and wrong. That's most important. Now, obviously, understanding of what is right and wrong is very subjective. But yes, from ethical perspective, once you are educated, you are pretty much aware the difference between right and wrong. And once you are aware what is being done right to you and what is being done wrong to you, it is only then you will be able to take a stand for yourself. A lot of women residing in villages, in the rural areas, they're not aware that what is being done to them is wrong. So one thing that is going to provide or that is going to improve the status of women in a society would be to making them educate, making them aware the difference between right and wrong. Now, this aspect could be quantitative. This aspect could also be qualitative. So here comes another element in my research study, whether my research study is a quantitative study or it is a qualitative study. So if you're talking about the quantitative study, it's numbers. So you're going to deal with numbers, you're going to deal with all your econometric modeling, you're going to deal with all your statistical regression studies and make sense out of numbers. Any researcher becomes a researcher when that person knows to make sense out of numbers. So if you have data,
and you can make sense out of that data, sense means economic sense here, then you become a researcher. Okay, so now the first element, the first thing that I'm going to take into account is the education of women. It could be again quantitative or qualitative. Second variable in my research study that I took was the income generated by women. Now, income generated by women is very, very important, especially in a country like ours. You would come across households where the earning member has all the decision making. You would also come across households where the non-earning members take all the decisions. So I would want, and your role in decision making is very important when you're talking about the status in society. All right. So what I'm trying to say here is, what income are you generating? It has an impact on your status. It has an impact on the role of the role that you play as a decision maker in the society, in the household, and thereby in the society. So the three variables that I took was education, income, and the role in the household decision making. Now understand, income also is interactive with education. Higher the education, more the income. There is an enough literature behind that, but obviously you cannot generalize this in a society like ours, in an economy like ours. But yes, again, तो मैंने पहले बोला एजुकेशन के लिए मुझे अपने एक्सेल में लिखना है कि एजुकेशन के लिए रिव्यू करना है, चक 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 चक, ये सारे रिव्यू किए हैं एजुकेशन के, उनका रिजल्ट क्या है, वो क्या कहते हैं कि एजुकेशन से वुमेन का स्टेटस इंप्रूव होता है या नहीं होता. ओके. सेकंड, income generated by a woman in a society. So once I decide upon the income generated by women in the society, so I will just again have checkbox, review of literature, income से impact होता है status से या नहीं होता. Third thing, role in the household decision making. Now there is enough literature that proves, that elicited the fact that if a woman is active in the household decision making, then the status of that woman, those women in the society, has improved, significantly improved over the period of time. So this is your third dimension, that is role in the decision making. When I'm saying role in the household decision making, it includes both your personal decisions and the family decisions. And when I'm talking about decisions, it not only means the financial decisions, it also means the qualitative decisions of the society, of the household, and thereby your role in the society. So now I know third review of literature मुझे क्या करना है कि role of the household decision making अगर active हो तो status improve हो रहा है या फिर नहीं improve हो रहा. तो तीसरा आपका check point checklist आ गया, role in the household decision making. Okay. So what are the three variables that I took in my research study? I'll take a 2-minute break and I'll give you time to recollect your thoughts and write down in the chat box what are the three variables that I took in my research study, and whether they were quantitative or qualitative. Yes, all right, thank you, Rashi. Thanks, Neha. Thanks, Nikhat. Okay, so now I have identified my variables. I have identified the area I would want to work on. I have also identified the title. I have thanks Farah. I have also identified the variables I'm going to take into account and the nature of the variables. Now understand. Now, if you have a very keen look on these variables, a lot of you have also written on in the chat box. Now see, these variables are actually interactive with each other. So education has a role in decision making. Decision making has a role in education. Education has a role in income. Income has a role in the level of education.
income has a role in decision making. Role in decision making also has an impact on income. So since most of you are aware over here, there could be a problem of if the variables are interactive with each other. What is the econometric problem that you encounter? अगर हमारे explanatory variables एक दूसरे से interact कर रहे हो तो हमारे को क्या problem आ सकती है? Multicollinearity. Yes. So now I am aware well beforehand, even before starting my research, that I could encounter a problem of multicollinearity. Checkbox Excel में लिख लिया हमने कि क्या-क्या problems आ सकते हैं, क्या-क्या limitation हो सकती है मेरे study की. तो research basically एक process है. It's a story. It's like a storytelling. So you are doing something at every step. Every step is a building block in your study. Every step is a building block in your story. Every step is a paragraph in your narrative. तो जब जब आप काम करते रहो, नॉर्मली जब हम रिसर्च स्टडी करते हैं तो हमारी मेजर गलती क्या होती है? पहले हम टाइटल डिसाइड कर लेते हैं, फिर हम उसका रैशनल बनाने चलते हैं, फिर हम उसका रिव्यू करते हैं, फिर हम उसका डेटा डिसाइड करते हैं, लास्ट में उसकी लिमिटेशन ढूंढते हैं, और नहीं मिलती है लिमिटेशन, नहीं मिलता है रैशनल, नहीं मिलता है ऑब्जेक्टिव, तो फैब्रिकेट करते हैं. रॉन्ग. सो इट ऑल दीज स्टेप्स दे आर इंटरैक्टिव विद ईच अदर. तो जैसे जैसे आप रिसर्च कर रहे हो वैसे वैसे ही अपने चेकलिस्ट में बनाते जाओ कि ये प्रॉब्लम मुझे आने वाली है, मुझे पता है कि ये वेरिएबल्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो मल्टीकोलिनियरिटी की प्रॉब्लम आने वाली है. तो जब मैं अपनी रिसर्च स्टडी करूंगी, जब मैं अपना रिसर्च डिजाइन फाइनलाइज करूंगी, जब मैं अपना मॉडल फाइनलाइज करूंगी, तो आई हैव टू बी कॉशियस कि मैं वो मॉडल लूं जो मल्टीकोलिनियरिटी की प्रॉब्लम को इग्नोर करता हो, या फिर मैं वो मॉडल लूं या मैं ऐसे मीन्स यूज करूं जो मल्टीकोलिनियरिटी के प्रॉब्लम को डील करता हो. तो मुझे अभी से ही पता है कि मल्टीकोलिनियरिटी का प्रॉब्लम आ सकता है. ऑल्सो मेरे वेरिएबल्स में एक और प्रॉब्लम आ सकता है, ऑटो कोरिलेशन का. व्हाट इज ऑटो कोरिलेशन? What is autocorrelation? The example that I took, I'm telling you beforehand, मेरे मॉडल में autocorrelation का प्रॉब्लम भी आ सकता है. What is autocorrelation? What is autocorrelation, guys? The relationship between the error terms, or when the error terms are actually correlated with each other. Error term correlated होने का मतलब क्या है? Divergent from the mean value, वो आपस में correlated है. ठीक है? तो मैं अगर एक्सपेक्ट कर रही हूँ ऑन एन एवरेज ऐसा बिहेवियर होना चाहिए, तो वो जो एरर है, जो डाइवर्जन है ऊपर नीचे, वो कोरिलेटेड है. मेरे मॉडल में ऑटो कोरिलेशन का प्रॉब्लम आ सकता है. कोई बता सकता है क्यों आ सकता है? कोई अनएजुकेटेड है जनरेशन से तो वो अनएजुकेटेड ही रहेगा, राइट? कोई अनएजुकेटेड है तो उसके इनकम का डाइवर्जन होगा. कोई अनएजुकेटेड है तो उसका डिसीजन मेकिंग में रोल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होएगा, राइट? तो एरर टर्म्स आपस में कोरिलेटेड हो सकते हैं मेरे मॉडल में, बिकॉज आई एम डीलिंग विद बिहेवियरल स्टडीज, आई एम डीलिंग विद ह्यूमन स्टडीज. Because I am dealing with these variables, I beforehand know that these could be the two limitations. तो हमने अपने पहले ही weaknesses में, limitations में डाल दिया कि ये दो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मल्टीकोलिनियरिटी का प्रॉब्लम हो सकता है, ऑटो कोरिलेशन का प्रॉब्लम हो सकता है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. अब मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरे ये तीन वेरिएबल्स हैं, इनकम, एजुकेशन एंड द रोल इन द डिसीजन मेकिंग. इनमें से इनकम जो है मैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल लेने वाली हूँ, एजुकेशन भी मैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल लेने वाली हूँ, एंड रोल इन डिसीजन मेकिंग मैं क्वालिटेटिव वेरिएबल लेने वाली हूँ. तो ये आ गया मेरे पास कि मेरे क्या क्या वेरिएबल्स का क्या क्या स्टडी होगा. तो हमने इन सारे वेरिएबल्स पे रिसर्च कर लिया. अब रिव्यू कर लिया. दो तरीके का रिव्यू. पहला रिव्यू रैशनल के लिए, दूसरा रिव्यू इनके नेचर के लिए. एक तो मैंने ये रिव्यू किया कि मैं इन वेरिएबल्स को क्यों ले रही हूँ, दूसरा मैंने ये रिव्यू किया कि मैं इन वेरिएबल्स को अगर ले रही हूँ
तो इन वेरिएबल्स का नेचर क्या लेने वाली हूँ और क्यों लेने वाली हूँ, क्यों मैं एजुकेशन को क्वालिटेटिव लेने वाली हूँ, क्यों मैं रोल ऑफ डिसीजन क्वांटिटेटिव लेने वाली हूँ, हालांकि एजुकेशन क्वालिटेटिव भी हो सकता है, तो मैं क्यों एजुकेशन को क्वांटिटेटिव ही लेने वाली हूँ और मैं क्यों रोल ऑफ डिसीजन मेकिंग को क्वालिटेटिव लेने वाली हूँ। तो ये इस सब का भी मेरे पास रिव्यू होना चाहिए। तो पहला रिव्यू रैशनल के लिए, दूसरा रिव्यू कौन से तरीके की मैं मेथड या कौन से तरीके का नेचर मैं उसको डायरेक्ट कर रही हूँ, तो वो नेचर क्या, उस नेचर के लिए क्या रिव्यू होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया मेरा अगला स्टेप। Pooja ma'am, before I proceed further, could you please tell me how much time do I have for this session so that I can wind up accordingly? You can take a 10 minutes break, Trisha, right now. Abhi? Yes, you can take a break of 10 minutes. Students will also recollect what is done. And then, Okay. Okay, and then we will proceed further. I'll talk to you about it. ठीक है Kavita ma'am. Okay guys, so I'll take a break for 10 minutes, then we'll proceed further, okay? So meanwhile, you can recollect your thoughts. If there are any doubts, any issues, you can write down in the chat box. Yes, so I think that tea break was enough. So students, are we all ready? So people have answered to your questions. I think error term are correlated. Yes. So my students are really doing good. I'm very happy. Yes, ma'am, we are ready. So yes, you have got the response. Okay. So whatever we have done so far, I just wish to know any doubts over there so far? Any doubts so far? Okay. So since you people have no doubts, can you maybe let's do a little exercise over here. Let's see, as ma'am mentioned, a lot of you are wanting to build your career in research. So could you please write down the areas that would you want to work so that I could also pick up examples from those areas only? What are the different areas you would want to research on? Policy design. Policy design is very elaborate. What area of policy design? Green products, good area. AI and sustainability is such an upcoming topic. A lot of people are working. Rajat, very good topic. Okay, so so we mentioned that we have a broad area where would we want to work on. We have the title. Now we have identified the problem. So we are also writing down the problem statement. Then we decide upon the variables. Then we decide upon the nature of the variables. Then we decide whether the variables are interactive among themselves or not. We also decide what could be the probable weaknesses or limitations of my study. So all this we have covered so far. Now moving on to next step, objectives. तो मेरे रिसर्च के क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं? Now, okay, let's do another exercise. The topic that I have chosen is the status of women in Indian society. What could be the probable proposed objectives of my study? So let's write down the objectives of the study in the chat box. What could be the possible objectives of my study?
Okay, green products, awareness of green products, willingness to purchase green products. Okay, this could be the objective of your first study. What else? So how are we going to write down these objectives? To create awareness of green products among the target group. To assess whether people are willing to purchase green products or not. This is how you jot down your project, your objectives. Okay. To us, moving on. More objectives, please. To identify and analyze the factors affecting the role of women in decision making. Very good. This could be one of the proposed objectives. Assessing the environmental impact of AI technologies in developing sustainable AI models. So let me just too many words in one sentence. Assessing the environmental impact of AI technology in developing sustainable AI model. Now, I took a second, a pause to understand. So whenever you're jotting down your objective, it should be clear, crisp, and not too many words. इस एक ऑब्जेक्टिव से मैं 3 ऑब्जेक्टिव्स निकाल सकते हो आपके. तो जब भी आप अपने रिसर्च का ऑब्जेक्टिव लिख रहे हैं, एक ऑब्जेक्टिव में एक ही चीज को टारगेट करो. या तो आप एनवायरमेंटल इम्पैक्ट देखो ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, या फिर आप चेक करो कि हाउ विल इट मेक द मॉडल मोर सस्टेनेबल. So whenever you are writing, investigating the role of AI in promoting sustainable resource management of the government. Good. So you would want to investigate the role of AI in promoting sustainable resource management. That's it. So whether it is government, whether it is the private sector, what sector are you talking about, whether it is corporate sector, it shouldn't come in your objectives. Objectives सिर्फ आपके perspective को दिखाना चाहिए. क्या वर्क एरिया है वो दिखाने की कोई जरूरत नहीं है. और लिखो ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं आपके एरियाज के, whatever area would you want to work on. To investigate the relationship between demonetization and Indian currency market. To investigate the relationship between demonetization and Indian currency market. Okay. So you basically would want to know, Paul, whether demonetization has impacted Indian currency market. Is this what you would want to do? Okay. So the right way of framing it is to assess whether demonetization has an impact on Indian currency market, or to assess the impact of demonetization on Indian currency market. So it has to be clear. To identify the challenges faced by women in the Indian households. Okay. To assess the challenges faced by the women in Indian households. Okay, kind of, yeah. It is around the periphery of the topic, but yes, okay, that could be taken. Or likho.
Significant impact is what I was thinking about. So you should mention significant. Yes, of course you can mention significant impact. But when you write significant impact, you are already putting across a thought that you know that it has a significant impact. But research, you're trying to find out answers. So you can say whether there has been a significant impact or not. Instead of saying there is a significant impact, you just say whether there's a significant impact or not. Okay, so let's come back now, since a lot of you have kind of done this exercise, so kind of are aware or have tasted what objectives look like. So whenever you decide your objectives, 3 things you need to keep in mind. One, objectives have to be very, very clear, direct, that a layman should also understand it. Try and avoid using economic or technical jargon in your objectives. Whenever you're using a technical jargon or economic jargon in your objectives, you could actually mention a keyword down, but that also besides after your introduction. So objectives जब आप लिखोगे, objectives में 1 second I'm so sorry. Okay. So जब भी आप अपने ऑब्जेक्टिव्स लिखोगे, आपके ऑब्जेक्टिव्स इस तरीके से लिखे होने चाहिए कि कोई नॉन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से भी हो तो उसको ऑब्जेक्टिव से पता चल जाए कि आपका रिसर्च पेपर, आपका रिसर्च बुक क्या टारगेट करने की कोशिश कर रहा है. तो ट्राई एंड अवॉइड यूजिंग टेक्निकल और इकोनॉमिक जार्गन इन योर ऑब्जेक्टिव अनलेस इट इज इम्पोर्टेंट. लाइक अगर मैं इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस की बात कर रही हूँ तो मेरे को इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस यूज करना ही पड़ेगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है. अगर मैं उनके मूविंग अहेड और मूविंग बैकवर्ड के बारे में, बैकवर्ड लुकिंग एंड फॉरवर्ड लुकिंग के बारे में बात करूँ तो मुझे फॉरवर्ड लुकिंग बैकवर्ड लुकिंग मेंशन करना ही पड़ेगा. बट जहां तक पॉसिबल है वहां तक आप हमेशा अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स में टेक्निकल जार्गन को अवॉइड करेंगे. नाउ कम्स द नेक्स्ट स्टेप, इंट्रोडक्शन. Now, how do you introduce yourself? If you go for an interview, what are the important things that you mention in your introduction? So in an introduction to your research paper or research work is something similar to introducing yourself. So how do you mention, what all do you mention in your introduction? क्या-क्या लिखना है आपको अपने introduction में? क्या-क्या mention करते हो आप अपने introduction में? What all do you mention in your introduction? So whenever you're going for an interview, what all do you mention for in your introduction? Introduction में हम क्या लिखते हैं? ये आप क्या बताते हैं? All of you must have gone for interviews. What all do you mention in your introduction? So an introduction is a statement, introduction, while you're introducing yourself, you jot down anything and everything that is not mentioned on your CV. जो चीजें आपकी CV में नहीं है, normally हम introduction में वो बताते हैं. Okay? Also, हम introduction में अपने
पर्सनल बायसेस, अपने पर्सनल थॉट प्रोसेसेस, अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन अवॉइड करते हैं। सिमिलरली रिसर्च के इंट्रोडक्शन में हम वो सब कुछ लिखेंगे जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट में, रिसर्च डिजाइन में, रिसर्च मॉडलिंग में, कंक्लूजन्स में मेंशन नहीं है। तो फॉर अ लेमैन, जैसे हमने स्टेटस ऑफ वुमेन के बारे में बात करी, तो हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे वुमेन एम्पावरमेंट, हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे जेंडर रोल्स, हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे कि हिस्ट्री ऑफ जेंडर रोल्स इन द इंडियन इकोनॉमी और इन द वर्ल्ड इकोनॉमी पर से। हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे हाउ डिफरेंट इकोनॉमीज हैव वर्कड ओवर जेंडर रोल्स, हाउ वुमेन एम्पावरमेंट इज इम्पोर्टेंट. So introduction should have everything that is not there in your abstract, that is not there in your research design, that is not there in your modeling, that is not there in your conclusions, that is not there in the body of the research study. Okay, that is, so your introduction should have it all. जो भी चीज आपके बाकी के पेपर में मेंशन नहीं है, इंट्रोडक्शन में आप वो सब लिखेंगे. So it is going to give you a little background of what you are going to do, why you are going to do, but not directly stating why you are going to do. The last paragraph of your introduction should have the rationale, direct rationale कि मैं ये कर रही हूँ, ये इसलिए कर रही हूँ, ये वेरिएबल्स लूंगी और इसलिए इम्पोर्टेंट है, और मेरा रिसर्च क्यों इम्पोर्टेंट है, मेरे रिसर्च का क्या सिग्निफिकेंस होगा, क्या सिग्निफिकेंस होगा, वो सब आपको अपने इंट्रोडक्शन में मेंशन करना. मूविंग ऑन, मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मेरे को क्या काम करना है, मैंने ये डिसाइड कर लिया कि कौन से वेरिएबल्स पे काम करना है, मैंने ये डिसाइड कर लिया कि वेरिएबल्स का नेचर क्या होगा. अगला इंपॉर्टेंट बात जो मुझे करनी है, अगली इंपॉर्टेंट बात मुझे करनी है कि मेरा रिसर्च एरिया क्या होगा. अब एज एन इंडिविजुअल आई वुड वांट टू वर्क ऑन इंडिया, ये तो पॉसिबल नहीं है. मैंने अपने ब्रॉड एरिया में ये डिसाइड किया कि मुझे स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया डिसाइड करना है, बट एज एन इंडिविजुअल कैन आई डू दैट? नो, I obviously I cannot study the whole of the country, but I still wish to know whether the status of women has improved in India or not. तो मुझे ये डिसाइड करना है कि मुझे पॉपुलेशन के साथ डील करना है या मुझे सैंपल के साथ डील करना है. आप लोगों को ऑलरेडी पता है, a population is a collection of elements which has all the elements in it. A sample is a representative of population. So we have two heads with us, a population जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स हैं हमारे रिसर्च एरिया के, और सैंपल जो रिप्रेजेंटेटिव है हमारे पॉपुलेशन का. Now remember this diagram you must have done somewhere in your research, somewhere in your statistics. जब हम पॉपुलेशन से सैंपल की तरफ जाते हैं, we involve something called as probability studies. जब हम पॉपुलेशन से सैंपल की तरफ जाते हैं, we involve something called as probability studies. ठीक है, तो जब हम पॉपुलेशन से सैंपल की तरफ जा रहे हैं, तो मतलब मैं ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं पूरे पॉपुलेशन से डील करने वाली हूँ या मैं सैंपल से डील करने वाली हूँ. अगर मैं पूरे पॉपुलेशन के साथ डील करने वाली हूँ तो मैं क्या करने वाली हूँ, मैं कौन से तरीके के लोगों से बात करने वाली हूँ, मैं कौन से तरीके के सेक्शन को टारगेट करने वाली हूँ, वो सब आएगा मेरे पॉपुलेशन में, राइट. वहां से मेरे को निकालना है सैंपल. तो जब मैं पॉपुलेशन से सैंपल निकालूंगी, तब मैं क्या कर रही हूँ, मैं प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व कर रही हूँ. क्यों? क्योंकि मैं सारे के सारे एलिमेंट्स को चूज नहीं कर रही हूँ ना, मैं एक रिप्रेजेंटेटिव स्मॉलर सेट यूज कर रही हूँ. तो जब मैं एक रिप्रेजेंटेटिव स्मॉलर सेट यूज कर रही हूँ, तो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग चोजन यूज कर रही हूँ. तो जब मैं पॉपुलेशन से सैंपल की तरफ जाऊंगी, I will make use of a study called probability study. Now, what am I doing? If I decide to work on the sample, so whatever I'm doing in the sample, whatever research I'm doing on the sample, I'm having a research design, then I'm having a research technique, then I'm having a research model. I'm having that model, I'm bringing out results, and then I'm presuming that whatever is true for the sample holds true for the population as well. तो जब मैं पॉपुलेशन से सैंपल की तरफ जा रही हूँ, आई एम इन्वॉल्विंग अ स्टडी कॉल्ड प्रोबेबिलिटी स्टडी. जब मैं सैंपल पे काम करके
पॉपुलेशन के लिए उसको मान रही हूँ कि वो सच है, उसको जनरलाइज करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं उसको क्या कहती हूँ, इनफरेंशियल स्टडीज. सो प्लीज राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, whenever we move from population to sample, what study does it involve, and whenever we move from sample to population, what sort of study does it involve? हाँ जी, जब हम पॉपुलेशन से सैंपल की तरफ जा रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी स्टडी, सैंपल से पॉपुलेशन की तरफ जा रहे हैं तो सैंपल से पॉपुलेशन की तरफ जा रहे हैं तो इनफरेंशियल स्टडीज. ओके, तो बेसिकली जब हम सैंपल को चूज कर रहे हैं तो हम रिप्रेजेंटेटिव सैंपल चूज कर रहे हैं, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है तो हम मान रहे हैं कि जो भी वो रिप्रेजेंट कर रहा है वो पॉपुलेशन को करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है. तो जो भी हमारे रिजल्ट्स आएंगे सैंपल पे वो ट्रू होने चाहिए पॉपुलेशन पे भी. ठीक है, तो इधर हमारा एक और पंडोरा बॉक्स खुल जाता है कि हमें पॉपुलेशन के साथ डील करना है या सैंपल के साथ डील करना है. और अगर सैंपल के साथ डील करना है तो हम किस तरीके से सैम्पलिंग करेंगे. जब हम ये डिसाइड कर लेंगे कि हम किस तरीके से सैम्पलिंग करने वाले हैं तो हमें ये भी डिसाइड करना है कि कौन कौन से टाइप की सैम्पलिंग होती है. क्लियर? Am I audible, people? Am I audible, people? So now we decide why sampling, a major reason why we take up studying sampling rather than the whole group is that obviously because the whole group is so large that studying it won't be feasible. For example, if I wish to find out the status of women in the whole country, I cannot study the whole population because I cannot go through from door to door from each and every woman. So it is pretty much obvious in that case that I will have to choose for samples. But however, if a research work is being done by a research organization huge enough to finance, to provide you with army of people, then I can obviously take this up as to be done for the population. For example, ये जो मेरा टॉपिक है, मैंने टॉपिक लिया स्टेटस ऑफ वुमेन. अब मैं तो रिसर्च कर रही हूँ, मैं तो सैंपल पे काम करूंगी, मैं एनसीआर को सैंपल चूज करूंगी. तो पहली बात तो मुझे चूज करना है कि मेरे को सैंपल चूज करना है. और वही सैंपल क्यों होना चाहिए, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव है. इस पे वापस आते हैं बाद में एग्जाम्पल से, पहले थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं इसके बिहाइंड. बट अब यहीं से मैंने एक चीज डिड्यूस करी कि मैं अपने पॉलिसी सजेशन में ये सजेस्ट करने वाली हूँ कि गवर्नमेंट जो काम मैं एनसीआर पे कर रही हूँ, गवर्नमेंट को वो ऑल इंडिया लेवल पे करना चाहिए. तो गवर्नमेंट को अपने जो गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री है फॉर डेटा फॉर स्टैटिस्टिकल एंड प्लानिंग ऑपरेशन, तो गवर्नमेंट को मैं ये सजेस्ट कर रही हूँ कि मैंने तो एनसीआर पे कर लिया, बट नाउ यू शुड एक्चुअली डू इट एट द ऑल इंडिया लेवल. ठीक है, तो यहां से मैंने डिड्यूस कर लिया अपने सजेशन. तो मेरे पास 3 कॉलम बन चुके हैं अभी तक, जो मैं प्रोसेस और प्रोसीजर फॉलो कर रही हूँ, मेरे लिमिटेशंस क्या क्या हैं, और तीसरा मेरे सजेशंस क्या क्या हैं. ठीक है, नाउ the question is that I have chosen sampling because obviously as an individual I am incapable, I am not capable enough to take care of all the population elements. So I am going to take the representative of the population. Now the question is, how representative is the selected case is. So now what we are trying to find out here is that whether I have to gain some sort of knowledge to identify whether this population can be considered as having a knowledge or representative about the whole group of people or not. Now the answer to that will depend upon how do we identify this sample.
whether whether this particular chosen sample or elements would have the capability to reflect the true opinion of all the population, or whether they would be able to represent the view of all the women, with whether they will be able to actually represent, give you the actual true picture of the status of women or the position of women in the Indian society. So all I'm trying to say here is that the ultimate purpose of sampling over here is to actually get the accurate representative if I've decided that I would be working on the sample. So the important consideration over here would be whether how a sample is representative of how are we going to draw a set of people or population which is going to represent the whole population. तो अभी जब भी मुझे डिसाइड करना है कि मैं कोई सैंपल डिराइव कैसे करना है, तो देयर आर टू थिंग्स दैट आई एम गोइंग टू कीप इन माइंड, whether I'm going to go for casual sampling or I'm going to go for scientific methods of sampling. Now, in everyday life, in your day-to-day life, some way or the other, we are making sampling decisions. So whenever we are going to maybe go for movie, we are deciding to what sort of car am I going to purchase. I am going to decide what sort of class selection do we have. I'm going to decide what sort of feedback is there about the client servicing in your industry, what set of agency meeting is there, what sort of information do I have to give to a representative, whether that information could be misleading, biased, whether people attending a meeting, whether all of you who are attending this particular session, if I have to give the actual feedback about this session, I am obviously going to take about the sample of people who have been responding to my questions. So by now, after I have asked so many questions, now I kind of know who all are going to answer. So now I know this is my representative sample. So in my everyday day-to-day life, everything that I'm doing, I'm involving in something called as sampling study. However, जब मैं रिसर्च स्टडी कर रही हूँ, जब मैं कोई एक प्रॉपर मैकेनिज्म फॉलो कर रही हूँ, इस प्रॉपर मैकेनिज्म में मैं साइंटिफिक सैम्पलिंग यूज करती हूँ. साइंटिफिक सैम्पलिंग इज अ मोर careful mechanism of choosing the representative lot from that of the population. तो इस representative lot के बारे में जब मैं बात कर रही हूँ, तो मैं basically I'm trying to follow the procedures that have been developed over the period of time by different researchers, by different statisticians, which minimize the likelihood that these samples are biased, or which minimize the likelihood that these samples will be involving or representing a certain set of knowledge, a certain set of information only. So the major purpose of sampling, scientific sampling or sampling, is basically to draw a subset of people from the population, so that this set of subset is actually representative of the population, and whatever results do I have over here can be applied to the whole population. For example, जब मैं इस particular session का feedback दूंगी और मैं ये 5 लोगों के बेस पे, जो 5 या 6 लोग मेरे को रिजल्ट्स मेरे क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हैं, अगर मैं इनके ऊपर बेस करके अपना फीडबैक देती हूँ, तो वो नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, because these 5-6 people are just representing the active set of people in the population. That does not mean that people who are not responding are not being helped, or the benefits of this particular research is not being extended to that set. However, if I give my feedback based on only this handful of people, then it will be casual sampling, क्योंकि मैंने जनरली जिन लोगों ने जवाब दिया उनके बेसिस पे आंसर कर दिया, उनके बेसिस पे फीडबैक दे दिया. बट जब मैं रिसर्च स्टडी कर रही हूँ, तो मैं ऐसे कैजुअल सैम्पलिंग नहीं कर सकती. तब मैं क्या करूंगी? तब मैं प्रॉपर साइंटिफिक मेथड यूज करूंगी, और वो साइंटिफिक मेथड इस तरीके का सैंपल ड्रॉ करना चाहिए जो
मेरे पॉपुलेशन को कंप्लीटली रिप्रेजेंट कर पाए, ताकि मैं इन्फर कर पाऊं, रिमेंबर इन्फरेंशियल स्टडीज, ताकि मैं इन्फर कर पाऊं कि जो भी मेरे स्टडीज ट्रू हुए हैं, जो भी मेरे स्टडी के रिजल्ट्स आए हैं इस सैंपल के ऊपर, दे अप्लाई, दे आर एप्लीकेबल टू द होल पॉपुलेशन. So before I proceed further, let's go back to a quick brush up of the terminology that we use in the sample while we're taking care of the sample. So number one, we have study of the target population. तो हमें पता है कि target population क्या है? It is all collection of all the possible people who will be targeted or who would be impacted by the kind of study that I'm doing. मेरे केस में targeted population क्या होगी? Women in India. राइट मेरे केस में, बिकॉज मैंने जो एग्जांपल लिया स्टेटस ऑफ वुमेन का लिया है, मेरे केस में टारगेट पॉपुलेशन क्या होगी? ऑल द वुमेन इन इंडिया. देन whenever we are deciding about a population, now this was what we do, this is what we do. Now let's go back to writing of a research paper. तो जब भी मैं अपने रिसर्च पेपर में ये डिसाइड करूंगी, ये लिखूंगी कि मैं सैंपल पे काम कर रही हूँ, पॉपुलेशन पे काम नहीं कर रही हूँ, या मैं पॉपुलेशन पे काम कर रही हूँ, what sort of data am I dealing with? So there are 4 things that I need to mention: content, unit, extent and time. I repeat, content, unit, extent and time. इसे हम बोलते हैं CUET, content, unit, extent and time. These are the 4 things that should be mentioned while talking about your sampling method in your research paper. Content का मतलब क्या क्या characteristics होंगे population में, कि population के क्या क्या characteristics हैं which are in common. मेरे केस में content क्या है? all of them are women. मेरे केस में कंटेंट क्या है? ऑल ऑफ देम आर वुमेन. कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, सबके सब वुमेन है. सेकंड, यूनिट ऑफ एनालिसिस. यूनिट ऑफ एनालिसिस मतलब मैं कैसे मेजर करने वाली हूँ इस पर्टिकुलर डेटा को. अगर वेट होगा तो किलोग्राम्स है, क्विंटल्स है, टन्स है. लोग होंगे तो नंबर्स, डिस्क्रीट नंबर्स हैं. जैसे मेरे पास इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन थी तो मैंने उसको बाइनरी नंबर दिया था 121212 101010. तो आपको किस तरीके का डेटा, यूनिट, कौन से यूनिट में आप अपने रिजल्ट्स को, कौन से यूनिट में आप अपने ऑब्जर्वेशंस को नोट करना चाहते हो. थर्ड, एक्सटेंट. आपके सैंपल का एक्सटेंट क्या है, स्पेशली और ज्योग्राफिकली. टाइम. The time period is a must, because unless you mention the time period, this particular subset of people do not qualify to be a sample. तो मैंने ये बोला कि मैं मेजर करना चाहती हूँ status of women in the post reform period. ओके, तो पोस्ट रिफॉर्म पीरियड हो गया मेरा टाइम, ज्योग्राफिकल एरिया हो गया मेरा दिल्ली एनसीआर, यूनिट हो गया मेरा नंबर्स, एंड वो हो गया मेरा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, कंटेंट क्या हो गया मेरा, वुमेन. सो ऑल दीज 4 चेकलिस्ट इज mentioned. CUET, content, unit, extent and time. Please write down in the chat box the 4 things that you need to mention while you're talking about your data elaborately in your research paper. Content unit again. So we have people who have mentioned, ma'am, then we'll take historical factors as well, right? Of course, that will be counted in the time zone. जैसे मैंने post reform period लिया, आपका study could be actually improvement in the status. अगर हम improvement in status के बारे में बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो हिस्टोरिकल फैक्टर्स लेगा. जेंडर, मैंने अपने इंट्रोडक्शन में मेंशन किया है दैट वी हैव हैड जेंडर डिस्पैरिटीज,
we've had one particular gender which has been depressed in the society, which did not have the right sort of coverage, which did not have the right sort of representation, which did not got the due effort, the due streamlined efforts to that particular gender. So of course we did have, we are going to take into account. So this was about the 4 things that will be covered: content, unit, extent and terminology. Moving on, तो next बात करते हैं अगले सैम्पलिंग टर्मिनोलॉजी की, दैट इज सैम्पलिंग फ्रेम. अब हम सैम्पलिंग फ्रेम में क्या करने वाले हैं? सैम्पलिंग फ्रेम हमें बताएगा, ये भी हमारे रिसर्च पेपर में मेंशन होगा कि सैम्पलिंग फ्रेम क्या है हमारा. सैम्पलिंग फ्रेम में हम ये मेंशन करने वाले हैं कि हमारे पॉपुलेशन के अंदर, हमारे स्टडी पॉपुलेशन के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, किस तरीके के एलिमेंट्स हैं, और कितनी स्टडीज में या किस टाइप की स्टडीज में एक्चुअल स्टडी हुई है या एक्चुअल डेटा पे काम हुआ है. जैसे फॉर एग्जांपल मेरे केस में मैंने बोला स्टेटस ऑफ वुमेन, तो मैं एग्जांपल दे सकती हूँ पॉपुलेशन स्टडीज का, मैं एग्जांपल दे सकती हूँ व्हाट डू यू कॉल इट, सेंसस का, मैं एग्जांपल दे सकती हूँ इंडिया के एम्प्लॉयमेंट डेटा का, मैं एग्जांपल दे सकती हूँ इंडिया के एजुकेशन डेटा का, बिकॉज गवर्नमेंट मॉस्पी ऑलरेडी ये काम कर रहा है. मॉस्पी इंडिया लेवल पे एजुकेशन मेजर कर रहा है जेंडर का, मॉस्पी इंडिया लेवल पे इनकम का डेटा कलेक्ट कर रहा है. तो मैं ये मेंशन कर, आई विल हैव टू मेंशन कि ऑलरेडी पॉपुलेशन लेवल पे इस तरीके का डेटा इकट्ठा हो रहा है. बट मैं क्योंकि सैंपल के बारे में बात कर रही हूँ, तो ये मेरा सैम्पलिंग फ्रेम ये होगा, और इस सैम्पलिंग फ्रेम के अंदर मैं ये काम करने वाली हूँ, या इस सैम्पलिंग फ्रेम के अंदर मैं इस तरीके के डेटा को लेने वाली हूँ. नाउ द क्वेश्चन इज, where you will have to also assess whether the sampling frame that you've chosen, is it adequate or not. Now determining the quality of the sample is very important, because the sample, whatever you're doing, your whole research is based upon the sample. मान लो आपने पूरा काम कर लिया, पूरा रिसर्च मेथड बना लिया, मॉडल बना लिया, मॉडल के अंदर सारे डेटा डाल दिए, सब कुछ वेरिएबल डाल दिया, रिजल्ट आ गया, और बाद में पता चला कि आपका सैंपल ही रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, आपका सैंपल ही बायस था. ओके, तो ऐसे, तो आपको जब ये बहुत छोटा दिखता है स्टेप, बट वेरी क्रूशियल स्टेप इट इज. तो आपको जब भी आप सैंपल डिसाइड करोगे, तो वो सैंपल का एडिक्वेसी चेक करना, उस सैंपल का क्वालिटी चेक करना, इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Now, some of the adequate sampling frames that obviously consist of the list of the numbers and of the members of the organization, they actually do explain what sort of sample can be drawn. So we already have an existing list of organizations which tells you how will you draw a sample, और sample का size क्या होना चाहिए ये भी बताएगा आपको. ठीक है, तो पहले हम ये कर लेते हैं, थोड़ी सी और थ्योरी के बारे में बात कर लेते हैं. जब भी हम सैंपल के बारे में बात करेंगे, so one of the ways is random selection. Why are we using this word random? Because we are trying to refer to a process which is actually scientifically generating a random result, or mathematically generating a random result, the one in which there is no humanly generated pattern which is existing. So we are just trying to say that randomly we are picking, in any random order, we are picking up the terms, we're picking up the members, we're picking up the elements. So because there is no scientific formula, because there is no scientific mechanism, there is no mathematical way or means to actually make selection to this particular sample, which is why we're using this term sample. Now understand that researchers in humanities or researchers in social sciences, they basically try to select the sample using a random procedure so that they can assure that there is no human bias which is existing in the selection process. So they're just trying to hope, or they're just trying to put forth that the inferences that they're trying to draw from the study will be maximally generalizable, statistically accurate, and useful. So they're just trying to say that they're just using random procedure which allow them
to use random probability sampling methods. So this is what is there on papers. So as a social scientist, as a humanitarian, as a expert or a researcher in the field of humanities, I would want to pick up a sample which is representative and that does not involve my personal bias. अब मैं अपनी सिंप्लिसिटी के लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए चूज कर लेती हूँ दिल्ली एनसीआर में से भी ऑब्वियसली मुझे जगह इंडिया का मैंने रिप्रेजेंटेटिव यूज किया दिल्ली एनसीआर। तो और एनसीआर में से मैंने सिर्फ मैं जहाँ रहती हूँ, मैं अशोक विहार रहती हूँ, मैंने अशोक विहार की सिर्फ वुमन ले ली और मैंने मान लिया कि जो भी यहाँ पे रिजल्ट है, वो जो भी मेरा स्टडी का रिजल्ट यहाँ ट्रू आएगा वो दिल्ली एनसीआर पे ट्रू होगा। नॉट राइट, because we are dealing with human nature which is erratic, which is random. So my sample should also have the representation which is random, which is erratic. Okay, so we are just presuming कि जब भी मैं sample choose कर रही हूँ, जब भी मैं sample draw कर रही हूँ as a human humanities scientist, मैं जब भी ये sample draw कर रही हूँ, मैं ये sample जो है वो representative draw कर रही हूँ। मैं ये sample बायस नहीं ड्रॉ कर रही हूँ, या फिर मेरे पास जो रिजल्ट्स आने वाले हैं मैं आई एम अनअवेयर। हाउएवर, सो दिस इज थियरी। हाउएवर, जब आप रिसर्च कर रहे हो, जब भी आप रिसर्च कर रहे हो, आपको बिफोर हैंड एक प्री कंसीव्ड नोशन है कि मेरे रिसर्च का रिजल्ट इस डायरेक्शन में जाना चाहिए। दिस इज एन आइडियल सिचुएशन। एजुकेशन का पॉजिटिव इम्पैक्ट होना चाहिए स्टेटस पे, इनकम का पॉजिटिव इम्पैक्ट होना चाहिए स्टेटस पे, रोल इन डिसीजन मेकिंग का पॉजिटिव इम्पैक्ट होना चाहिए स्टेटस पे। चलिए, बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, चलो पहले जो मैं एग्जांपल ले रही हूँ उसमें मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या क्या हैं। लेट्स जॉट डाउन इन द चैट बॉक्स। मेरे जो मैं एग्जांपल ले रही हूँ उसमें मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या है। We give you 2 minutes to think about it and write it in the chat box. Dependent and independent variables. All those who have their own areas to think, like the AI one and the policy one, they can also write down their dependent and independent variables. No responses. Dependent, independent variables. मेरे रिसर्च स्टडी में डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या क्या हैं? Are you people aware of what an independent and dependent variable is?
Okay, what are the other names for, okay, education is independent? No, okay. If you're trying to make a correlation between in Farah's area, purchase intention, necessary dependent, purchase intention, independent, awareness, EV, yes. Very good, Farah. So you know that what are your dependent and independent variables. The example that I am taking to assess the status of women in India in the post-reform period, what are my dependent and independent variables? Farah, it's one of your independent, just off the records, one of your variables that you took independent variables is awareness of financial incentives. Now, this is a very critical area. How are you going to measure awareness of financial incentives? I'll just repeat the question. How are you going to measure awareness of financial incentives? Okay, the example that I've been taking from the start, it is to assess whether the status of women in India has improved in the post-reform period. What are my dependent and independent variables? IPSA correctly mentioned the dependent variables would be status of women, independent variables would be education, income, and the role in decision making. Shafaq agreed to her and also gave the similar reply. Okay, what are the different names for dependent and independent variables? What are the other names for dependent and independent variables? My independent variable is also called an explanatory. Very good. Explanatory variables, exogenous variables. And what is my dependent term called accordingly? अगर independent variable explanatory है तो dependent variable explained variable हो गया. अगर independent variable exogenous है तो dependent variable endogenous हो गया. ठीक है जी? Okay. चलो. Going back to sampling techniques that we were discussing or that we were talking about. So as I mentioned, that sample will be representative because I'm talking about, yes, it is also called the explanatory variable is also called stochastic. The error term is also called stochastic, and the rest of it is non-stochastic in nature. Stochastic is random. So when we make an regression equation, then we say that the error term is stochastic. Your independent term is also called uncontrolled variable. So dependent terms in that case becomes controlled variable because हम उसको control करने की कोशिश कर रहे हैं, explain करने की कोशिश कर रहे हैं. Okay, going back to my sampling techniques. So there could be different types of sampling methods, techniques. अभी हमें ये पता चल गया कि हम sample क्यों ले रहे हैं, हम sample लेने के reason क्या हैं. उसके अलावा हमें ये पता चल गया कि हमारा sample representative होना चाहिए. उसके अलावा हमें ये पता चल गया कि हमारा जो sample है वो scientific method से draw किया जा सकता है या फिर casual method से draw किया जा सकता है. Now let's see what are the different types of sampling techniques. So there could be probability sampling, there could be non-probabilistic sampling. Probability sampling को हम probability sampling इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो probability theory के ऊपर बेस है, जिसमें हम बोल रहे हैं कि हर एलिमेंट को आप सेलेक्ट कर सकते हो या हर एलिमेंट की सेलेक्ट होने की इक्वल प्रोबेबिलिटी है, so that there is due representation. उसके अलावा probability sampling में there is random selection and also probability sampling में हम मानकर चल रहे हैं कि हमारे पास एक गलती हम कर सकते हैं, that is sampling error. Another weakness in my research study that there could be a sampling error. जब मैं sample choose कर रही हूँ तो मेरा sampling error भी हो सकता है. तो मैंने पहले से ही mention कर दिया कि मेरा sampling error हो सकता है. So probability sampling is based upon probability theory, which has equal chances of being for all the elements to be selected.
So in order to have the due representation, there is random selection, and we can estimate or we can have sampling error. So what are the different types of probability sampling? There are three types of simple probability sampling: simple random sampling, stratified sampling, and cluster sampling. उन सब के बारे में हम डिटेल में अभी बात करेंगे. तीन तरीके के probability sampling के बारे में बात करते हैं हम: simple random sampling, stratified sampling, and cluster sampling. सिंपल रैंडम सैम्पलिंग पहले थ्योरी से डील कर देते हैं. हम वहां पर लगाते हैं जहां पर हमारे पास रैंडम नंबर्स में, डिस्क्रीट नंबर्स में डेटा को हम लिख सकते हैं. हम ये मान लेते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के अंदर कि जो हमारा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एप्लीकेशन है वो इजी है, या जो हमारा जिस तरीके से हम सैम्पलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं विद प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, वो अप्लाई किया जा सकता है, वो जनरलाइज किया जा सकता है. एक बार अगर हमने सैम्पलिंग फ्रेम डिसाइड कर लिया तो हमारा जो रिसर्च एज अ रिसर्चर, हमारा जो रिसर्चर है, हमारा जो रिसर्च प्रोसेस है, वो हर मेंबर को कोई एक नंबर देगा, जिस नंबर से हर मेंबर हमारे जो पॉपुलेशन का है, हर मेंबर जो हमारे हमारे पॉपुलेशन, हमारे स्टडी एरिया का है, जिसको हम सेलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको एक रिप्रेजेंटेटिव नंबर मिलेगा. Just a sec, somebody just wrote something. Farah, I'll come to your question. Could you please pin it right now? I'll come to your question at the end of the session. This is an interesting area. Okay, moving on. हमारे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में हमारे सारे के सारे सैम्पलिंग मेथड, सारे के सारे सैम्पलिंग नंबर्स के ऊपर कोई हम पॉपुलेशन नंबर के ऊपर हम कोई एक नंबर हम असाइन कर लेंगे. उसके बाद हम कोई एक लिस्ट बना लेंगे, कोई टेबल बना लेंगे, कोई लॉटरी सिस्टम बना लेंगे, जिसमें हमारे पास पता है, हमें पता है कि जितने हमारे जो पॉपुलेशन के एलिमेंट्स हैं, उन सब किसको क्या नंबर मिला है. बहुत बार हमारे पास कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं, हमारे पास स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसमें हमें ये सब मैनुअली करने की जरूरत नहीं होती. हम सिर्फ उनको इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, हम सॉफ्टवेयर को इंस्ट्रक्ट कर देते हैं कि आप कि सारे के सारे एलिमेंट्स को नंबर देना है, तो सॉफ्टवेयर अपने आप रैंडम नंबर्स दे देता है सारे के सारे एलिमेंट्स को. So your simple random sampling is very, very simple to accomplish, and it is very simple to explain to others. It is, however, it is often found as impractical, specifically where we are dealing with large scale projects. तो अगर मुझे बोल दिया जाए कि सारे वुमेन इन इंडिया को नंबर कर दो और उसमें से रैंडम सैंपल ड्रॉ करो, तो it is very difficult for me to do that, right? So it is inconvenient. I can't be doing it. So whenever I'm going to talk about the simple random sampling, we know that it may not be efficient all the time. It could have issues. It could have its own set of issues. So whenever however, it is easier to explain. It is easier to sort of propose, but difficult to actually implement whenever we have a large number of population, or a large or a huge population that is involved with. So we decide what sort of sampling method are we going to take up, whether we are going to take up simple random sampling or not, depending upon the population size. अगर population size बड़ा है तो हम simple random sampling नहीं ले सकते. अगर population size फिर भी controlled है तो हम simple random sampling ले सकते हैं. Okay, is that clear? Is that clear? Okay, moving on to the next set, stratified sampling. अच्छा, simple random sampling, if you remember, आप बचपन में वो लॉटरीज होती थी. लॉटरीज में क्या होता है कि सबके पास एक नंबर होता है, एक फिश बोल होता है, फिश बोल के अंदर सारे लॉटरीज का नंबर डाल देते हैं, फिर हम रैंडमली कुछ 10 लोगों को सिलेक्ट करते हैं और हम बोलते हैं कि इन सबको प्राइज मिलेगा. तो रैंडम सिलेक्शन, सबको नंबर मिला है, सबका ड्यू रिप्रेजेंटेशन है, रैंडमली हमने निकाल लिया.
तो मैंने वुमेन इन एनसीआर को जॉट कर दिया नंबर्स में, जितने भी वुमेन है। उसके बाद रैंडमली कोई 100 का सैंपल मुझे डिराइव करना था. This comes to another question: what will be my size of the sample? I'll come back to that later, but yes, I need to, there's a formula to decide what should be the sample size. ऐसे नहीं हम अपनी मर्जी से डिसाइड कर लेते कि मैं 100 लोगों का सैंपल लेना चाहता हूँ या मैं 50 लोगों का सैंपल लेना चाहता हूँ. पॉपुलेशन के नंबर्स पे डिपेंड करके हमारे हमारे सैंपल का भी नंबर होता है. तो हम कैसे डिसाइड करते हैं? तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिंपली आपने सारे के सारे एलिमेंट्स को एक नंबर दिया, उसमें से रैंडमली कुछ लोगों को सेलेक्ट कर दिया, दैट बिकम्स अ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. Moving on to stratified sampling. Now for a little better precision than that of simple random sampling, and in order to kind of ensure, kind of make sure that whether the adequate number of smaller subgroups are there in the sample, say different sort of minorities are being represented. जब मैं वुमेन के बारे में बात कर रही हूँ तो मैं एथनिक माइनॉरिटी के बारे में बात कर रही हूँ कि वो सबके सब रिप्रेजेंट हो रहे हैं. हम क्या करते हैं, अपने पूरे सैंपल को होमोजीनियस सब ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं और उसके बाद सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कर देते हैं हर सब ग्रुप से. फॉर एग्जांपल, मैंने वुमेन इन एनसीआर को एज के बेस पे डिवाइड कर दिया. तो मैंने 5 स्ट्रैटम बना दिए. पहले उनको नंबर दे दिया, उसके बाद उनको अरे में अरेंज कर दिया. मैंने उनको अरे में अरेंज कर दिया. अरे में अरेंज करने का मतलब असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया. उसके बाद उनको एक स्ट्रैटम बना दिया ताकि मेरे सैंपल में ड्यू रिप्रेजेंटेशन हो. और जैसे सारे के सारे विद एज ग्रुप of say suppose 0 to 10 are in one stratum. तो उसमें से मैंने रैंडमली 5 लोग उठा लिए. 10 से 20 वाले एज ग्रुप से रैंडमली 5 लोग उठा लिए. अगले 10 में रैंडमली 5 लोग उठा लिए. अगले 10 में रैंडमली 5 लोग उठा लिए. So just because I wanted to make sure that all sort of representation is there in my sample, मैंने उनको सब स्ट्रैटम्स में अरेंज कर दिया और सब स्ट्रैटम में अरेंज करने के बाद उनके ऊपर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कर दी. तो दैट बिकम्स माय स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग. Moving on to the third method of probability sampling, that is your cluster sampling. Now, my population may actually be spread across a wide geographic region, specifically in case of women in India. So imagine if I have to take simple random sampling for this population, maybe via personal interview. अगर मैं status of women के बारे में बात कर रही हूँ और उसमें qualitative variable भी है, role in decision making, तो आप किसी से क्वेश्चनेयर भेज के रोल इन डिसीजन मेकिंग तो नहीं पूछ सकते. 1, ट्रू इन्फॉर्मेशन विल नॉट बी रिवील्ड. तो आपके पास 2 ही मेथड है, या तो आप इंटरव्यू मेथड से ये डेटा कलेक्ट करो या स्केड्यूल मेथड से डेटा कलेक्ट करो. सो maybe by the luck of draw you will wind up with respondents who will come across all over the state, but as an interviewer you will have a lot of traveling to do. So in that case, we divide our population into different clusters, maybe on the basis of geography, maybe on the basis of some sort of arrangement, maybe schools, colleges, work areas, maybe in the basis of organized people working in organized and unorganized sector. So we divide population into different clusters and then we randomly select clusters, and based on those clusters we make a random selection of elements. तो मैंने अपने population को different clusters में divide किया, उसमें से randomly cluster decide किया, cluster decide करने के बाद उधर से randomly लोगों को decide किया. So this is my cluster sampling. Now, I'll give you 5 minutes to recollect your thoughts and to jot down what are the 3 ways of probability sampling. Please type in the chat box.
No responses yet? What are the 3 methods of random sampling? Okay, IPSA. Simple random sampling, stratified cluster. Very good. Anyone else? Okay, so new entrant in our answering spree. Okay, so now since we have so many answers, it gives back my confidence that people are listening to me. Moving ahead to non-random sampling, non-probability sampling. So there could be probability sampling techniques which may be used only when we have a sort of sampling frame. Many times, whenever we are talking about studies in the social work or maybe in the humanities, it is impossible to develop a sampling frame of population. For example, मैंने तो बोल दिया that I would wish to figure out status of women in India. अब बहुत सारी वुमेन है इंडिया में जिनको मैं सैम्पलिंग फ्रेम में डाल नहीं सकती हूँ. बांग्लादेशी immigrants, people who have come from the rest of the world to travel India, but they stayed back. The Banjara population in India, the people from the tribal, from the tribes, from the national tribes of the country. They could be smaller tribes which are not being representative in that, which are not being represented in that sort of data collected by the government. Women from maybe eastern parts of the country, Bhutanese women. So these are all women who are staying in India, following and represented in any sort of data map. They've not made their mark in the data representation of the country. So because they've not made their mark in the data representation of the country, they cannot be there in the sampling frame. And once they're absent from a sampling frame, they're obviously gone from a sample also, because I'm using my probability sampling based on that frame only. So there could be sometimes a sort of assessment, an evaluation required as a part of your agency. Whether would you want people to work on this particular data set or not? Sometimes the researchers rely on their judgment in order to have a purposive kind of selection of the sample that seems representative or that seems relatively more fit for the purpose of inquiry. Sometimes they simply rely on the available subjects. So all the sampling techniques that do not involve the use of probability methods are being used in that case. And these are called non-probability sampling methods. So in general, however, probability sampling is the preferred method, but sometimes there are in certain occasions that specifically in applied social research, it is not feasible or practical or theoretically sensible to use random sampling. And in those cases, we need to use non-probability sampling, but we must be cautious and mindful of the risks that are inherent with it. तो जब मैंने अपना एरिया डिसाइड किया, मुझे उसमें ये भी डिसाइड करना है कि मैं प्रोबेबिलिस्टिक मेथड्स डिसाइड करूंगी सैम्पलिंग के या फिर नॉन प्रोबेबिलिस्टिक मेथड डिसाइड करूंगी. तो पहला मेथड और मैकेनिज्म ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग could be convenience sampling. So your convenience or availability sampling, also called, actually rely on the available subjects. It is inexpensive. It uses the ready access to certain set of population. Now you can maybe just ask the volunteers and provide incentives to them. There could be weaknesses that you may have no evidence of representativeness, but you may be able to justify that this is the most feasible methods many a times. Many a times you make use of convenience sampling
while you are doing a research as an individual researcher. If you are researching in line with a research organization as a group project with an army of people, then selection of convenience sampling is a complete no-no. As an individual, मेरे को research paper करना था status of women पे, मैंने convenience sampling कर लिया, अपने घर के आसपास के एरिया को identify कर लिया. Acceptable with the weakness or limitation that I have done convenience sampling because of the paucity of time, because of my limited availability to make a movement. But you are doing convenience sampling as a researcher for a research organization? No, complete no. So be very sure of the sort of sampling method that you are using. Second type of your non-probability sampling could be purposive sampling. Now, in the purposive sampling, बहुत specific purposes के लिए use की जाती है, जहाँ पे हमें पहले से ही पता होता है कि इस तरीके का डेटा है और हमें पहले से ही नॉलेज की जरूरत होती है. फॉर एग्जाम्पल, द AI दैट यू आर यूजिंग, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सस्टेनेबिलिटी के बारे में अगर आप बात करोगे, पीपल फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, दे विल नॉट गिव यू एनी रिस्पॉन्स. You talk to mates, they are not going to give you any response. So there is a specific sort, a target group for artificial intelligence, and talking about the sustainability. So you have a prior knowledge that this is the targeted group. Because this is the targeted group, you are already aware that this is a sort of people that you will have to, or you would want to take in your sample. So you as a researcher using your judgment or prior knowledge in order to collect your data, that will be your purposive sampling. Clear? Is that clear? Two types of non-probability sampling that I've discussed so far: purposive sampling and convenience sampling. Moving on to next, कोटा एंड स्नोबॉल सैम्पलिंग. अब कोटा का मतलब क्या है? कोटा का मतलब क्या है? हमारे पास प्रायर नॉलेज है, प्रायर इंफॉर्मेशन है, प्रायर करेक्टरिस्टिक्स है, प्रायर मेथड्स हैं, प्रायर सम सॉर्ट ऑफ सिलेक्शन मैकेनिज्म है. उसके बेसिस पे मैंने कोटा बना दिया. एजुकेशन के बेसिस पे, इनकम के बेसिस पे, द कैटेगरी दैट यू बिलोंग टू, उसके बेसिस पे मैंने कोटा बना दिया. उस कोटा में से लोगों को सेलेक्ट कर लिया. प्रायर नॉलेज यूज करिए कोटा बनाने के लिए. अब देयर कुड बी अ कंफ्यूजन बिटवीन क्लस्टर सैम्पलिंग एंड कोटा सैम्पलिंग. क्लस्टर सैम्पलिंग के केस में मैं क्लस्टर कर रही थी, कोई बेसिस नहीं था, कोई नॉलेज यूज नहीं कर रही थी. कोटा सैम्पलिंग में जब मैं कोटास बना रही हूँ तो मैं प्रायर नॉलेज यूज कर रही हूँ, प्रायर पर्पस यूज कर रही हूँ. ठीक है? तो इधर मैंने अलग अलग कोटास बना दिया, उन कोटास में से अलग अलग लोगों को सेलेक्ट कर दिया, सैंपल ड्रॉ कर लिया और मेरे पास एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सैंपल आ गया. प्रोबेबिलिटी यूज नहीं की. नेक्स्ट, स्नोबॉल सैम्पलिंग. I hope the difference between cluster, stratified and quota sampling is clear. I hope the difference between stratified, cluster and quota sampling is clear. Okay, moving on to next, snowball sampling. Now snowball sampling में क्या कर रहे हो आप? पहले से ही कोई क्राइटेरिया डिसाइड कर रहे हो कि ये लोग मेरे स्टडी के पार्ट होंगे और ये लोग मेरे स्टडी का पार्ट नहीं होंगे, और आप लोगों को ऑलरेडी अवेयर करा रहे हो, आप लोगों को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर रहे हो. यू आर ट्राइंग टू प्रोवाइड सिमेट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ डेटा, दैट दिस इज द प्रेमाइस on which you are being selected for this particular research study. ठीक है? Snowball sampling में there is symmetricity in terms of data. There is we as a researcher, I don't want to take risks, any sort of risk, because I don't want to take any sort of risk. So I am making it aware to the other person also beforehand. The
target audience beforehand, that this is the purpose for which I am making use of, I'm using you as an element in my data. This is generally done for the research studies which are little sensitive, in the sensitive area. For example, child abuse, for example, drug abuse, for example, use of policy targeted towards a very, very sensitive set of population. So all these are the area where you are going to make snowball sampling. तो जहां पे आप एज अ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हो, बट आप चाइल्ड अब्यूज पे काम कर रहे हो, या आप ड्रग अब्यूज पे काम कर रहे हो, या सेंसिटिव एरियाज में काम कर रहे हो, वहां पर आप स्नोबॉल सैम्पलिंग कर सकते हो. ऑल्दो इट इज अ नॉन प्रोबेबिलिस्टिक मेथड, बट आप स्टिल उसको यूज कर सकते हो एज अ मेथड और एज अ means of digging out a sample. Ipsa, you message something you want me to repeat. What would you want me to repeat, bache? Could you please mention in the chat box? I'll be happy to repeat it. Is it about the difference between stratified cluster sampling and quota sampling? Okay. So stratified sampling में मैंने stratums बनाए based upon no prior knowledge. Stratum बनाए कोई एक common characteristic पे. मैंने अरे में अरेंज कर दिया सबको, एजुकेशन, इनकम, एज की, उसमें से मैंने रैंडमली लोगों को सेलेक्ट किया. क्लस्टर के केस में मैंने कोई कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ढूंढा जिससे मैंने क्लस्टर बनाए. से वुमेन बिलोंगिंग टू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, women belonging to the southern part of the country, women belonging to the eastern part and the western part of the country. 4 cluster बनाए. कोटा के केस में मैंने prior knowledge यूज किया. Women belonging or educated in the field of science, women belonging in the or educated in the field of humanities. तो मैंने एक prior filter लगा दिया, उस filter के basis पे cluster decide किया. स्ट्रैटिफाइड और कोटा में मैंने रैंडम सिलेक्शन किया था, स्ट्रैटम का भी और कोटा का भी. क्लस्टर के क्लस्टर और स्ट्रैटम के स्ट्रैटिफाइड के केस में मैंने रैंडम सिलेक्शन किया था, क्लस्टर का भी और स्ट्रैटम का भी. कोटा के केस में आई हैव बीन स्पेसिफिक अबाउट द नॉलेज, द प्रायर नॉलेज, देन हैविंग द ड्यू रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ऑल द कोटास. ओके, so this is how these are different. तो कोटा के केस में मैं probability यूज नहीं कर रही हूँ, unless element यूज करना हो. सारे के सारे कोटास का ड्यू डिलिजेंस है, बट क्लस्टर और स्ट्रैटम के केस में ऐसा है कि हम रैंडमली क्लस्टर और स्ट्रैटम भी यूज कर रहे हैं. इज दैट क्लियर नाउ? ओके, मूविंग ऑन. So these were the different types of sampling methods. Now we know extreme cases पे हम लोग कौन से तरीके के सैम्पलिंग मेथड यूज करते हैं. थ्योरेटिकली हमें कौन सा मेथड यूज करना चाहिए in terms of deciding what sort of sampling method are going to use. Now let's come back to the question, sample size. हम randomly select नहीं कर सकते हैं. Normally जो लोग रिसर्च प्रोजेक्ट, स्टूडेंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स करते हैं, randomly they decide कि हमें 100 लोगों का सैंपल लेना है, randomly they decide कि हमें 75 लोगों का सैंपल लेना है. This is not the way how research works. Whenever you're deciding a sample, there is a formula for that. So there are different set of formulas which identifies. One of the mechanisms is to use Cochrane's formula. Cochrane formula आपको बताता है कि finite population के लिए sample derive करने का ये formula है, infinite population के लिए ये formula है. तो मेरा सैंपल साइज जब भी मैं डिसाइड करूंगी, it has to be using some scientific formula, some scientific method. It should consider the number of variables. It should take into account the probability of sampling errors. It should take into account the population homogeneity. It should consider the sampling techniques that are going to make use, that will be used in the sample that you've drawn. In general, whenever you decide the sample size, you just multiply the number of variables and the minimum number of cases. Now remember, जितने भी आपके, अब समझो एक
एक रूल होता है कि जितने भी आपके नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं +1 तो सैंपल में एटलीस्ट एलिमेंट्स होने चाहिए. सो आई केम अक्रॉस somebody in a research study who was doing a pilot study for her PhD. उसके एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल से 10 और पायलट स्टडी में ऑब्जर्वेशंस थी 8. तो would that be considered as a pilot study? Would that be considered as a pilot study? जितने आपके एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स हैं मिनिमम उतने तो होने ही चाहिए. एक्चुअली आइडियली +1 होने चाहिए. बट दिस इज ओनली फॉर पायलट स्टडी. जब आप रिसर्च वर्क कर रहे हो, जब आप पीएचडी कर रहे हो, जब आप थीसिस लिख रहे हो, आप एमफिल कर रहे हो, आप किसी भी तरीके का डेजर्टेशन कर रहे हो, you should ideally use Cochrane's formula or some sort of formula to decide your sample size. Randomly please select मत करना, then that will again be a limitation of your study. आप जब भी रिसर्च पेपर लिख रहे हो ये सोच के लिखो कि मेरा रिसर्च पेपर तो बेस्ट है और वो तो गवर्नमेंट के पास एज पॉलिसी डॉक्यूमेंट जाना चाहिए. तो आप ऐसी कोई चीज नहीं लिख सकते हो उसमें, दैट कैन बी क्वेश्चन टुमारो. तो सैंपल साइज जब डिसाइड करोगे साइंटिफिक मेथड डिसाइड करो. ठीक है. जितनी ज्यादा साइंटिफिक मेथड से आप सैंपल डिराइव करोगे उतनी ज्यादा आपके रिसर्च की स्टैटिस्टिकल पार होगी, और जितनी ज्यादा आपके रिसर्च की स्टैटिस्टिकल पार होगी उतनी ज्यादा आपके रिसर्च की स्टैटिस्टिकल आइडेंटिफिकेशन होगी. जितनी ज्यादा आइडेंटिफिकेशन होगी उतना ज्यादा इम्पैक्ट एक्सप्लेन कर पाओगे. तो जब भी रिसर्च करो ये सारी चीजों को दिमाग में रखना. एक लास्ट चीज जो आपको दिमाग में रखनी है सैंपल डिराइव करते हुए, कि आपका सैंपल कोशिश करो कि कम से कम सेंसिटिव हो टू डाइवर्सिटी इन सैम्पलिंग. So regardless of whether you're using probability or non-probability sampling methods, you should be able to carefully avoid gender bias. You should be able to, अब मेरा तो स्टडी जेंडर बायस पे है तो मुझे तो रखना ही पड़ेगा. बट अगर आप कोई जनरल टॉपिक पे बात कर रहे हो तो कोशिश करो कि सैंपल में जेंडर बायस ना आए. मेरे केस में तो जेंडर बायस आना ही है. ओके. Second thing that you should avoid, cultural sensitivity, not only while deciding the sample, but also at different phases of research. Also carefully examine whether certain minority groups are inadequately represented in the sample or not, whether we have made unwarranted generalizations or not. Employ local community members as research staff. Try and provide some sort of incentive to the researcher or the enumerator who is going to collect the data, so that he gives you the right data. He does not fabricate the data and come back to you. So try and keep all these things in mind while you decide the sampling method. All right. Is that clear? Is that clear, people? Okay. I think I'll take a pause over here for lunch. Pooja ma'am, Kavita ma'am, let's take a break for lunch for an hour now. Yes, we can go for lunch. All the students will join back after the lunch. And I request the IT people to please pause the recording. We'll be back after the lunch. So after the lunch, Trisha, you also talk about the test which you will be giving to them, one, and also continue with this. So, okay. Sure, ma'am. Shall we begin? All right. So before going for lunch, another 2-3 minutes. Some students had logged out, so they are getting in. Okay, no issue. We'll wait for another 2-3 minutes.
Good afternoon, dear students. Dr. Jolly, you are here? Yes, I'm here only. Yeah. Kavita ma'am had asked to wait for 2-3 minutes. Shall I begin now? Yes, ma'am. Yes, you can start now. Oh. Okay. So before I start, I would want put on the group also so that everyone joins. Yes, madam. I have sent a personalized message to the CRs. I'll write in a group as well. Yeah, Pooja ma'am, I would also seek your attention for 1 minute. Yes, I'll just start and I'll try and finish by 3:30. Then we can take your doubts, students' doubts until 3:45. Then we'll take a break for half an hour. At 4:15, I'll give you an assignment. It will be a 20 question MCQs, and Perfect, that ma'am. you can finish by 5. Yes. Does that sound fine? Yes, ma'am. Yes, sounds good. Chalo. All right, people. So let's begin from where we left. I'll quickly recapitulate what all we had done so far. So we had decided upon the macro topic, we had decided upon the title, then we had decided upon the objectives. Moving on, we had decided about the different types of review of literature that we are going to do. And lastly, we had decided whether we are going to deal with the population or the sample. And in case if we are dealing with the sample, because in general, it is difficult for an individual to take care of the population studies all by himself. So we are going to take up different sampling techniques and methods to decide upon a sample, and what will be the different methods, why are we going to take up different sort of methods of sampling. So a little thing that I had left over there was about the primary and secondary data. Since you people already have a background of economics, you must already be aware that primary data deals with the data that you are actually collecting by yourself, and secondary data, on the other hand, is the data that you collect by some other mechanism. If the time permits, I'll come back to the methods of collecting primary data as well later. But for now, let's leave it there and go on to our next step, that is deciding upon the hypothesis. Now, before we go on, what sort of hypothesis are we going to decide upon? We first need to know what is an hypothesis. So, a hypothesis is any sort of assertion that we are going to be testing in our research studies. So the hypothesis will be bringing the clarity, specificity, and focus to my research problem. But they're not essential for a research. So one can have a valid investigation without even constructing a single formal hypothesis. However, on the other hand, within the context of research study, you can construct as many hypotheses you want to consider that you find appropriate. However, there are some people who believe that one must formulate a hypothesis to undertake an investigation. However, it is not true for all type of studies. Sometimes you may not have an assertive hypothesis. There could be a quest that you would want to explore. Specifically in the areas of ethical backgrounds, you may not always have a hypothesis. So basically, hypotheses primarily arise from a set of hunches that you have, which you want to test through a study. And obviously, one can conduct a perfectly valid investigation without having these hunches or speculations. So all I'm trying to say is that a hypothesis is required to enhance, to sharpen your ability to have a focus sort of a research study, which is a little more focused, little more direct, little more directive in principle. So there are three things that we need to keep in mind while we are deciding upon the hypothesis. Number one, a hypothesis is a tentative proposition. So whenever you having a hypothesis, it does not mean that it is a hypothesis, as actually a tentative proposition. Second, the validity of your hypothesis is unknown. One cannot say with assertion, with certainty, that this hypothesis is true. Although
we may have an idea of how or whether the hypothesis will turn out to be true or false, but the validity of the hypothesis is yet unknown. Say for example, in my example that I have been taking, one of the, I could have actually netted hypothesis. One of the hypotheses that I could have states that the status of women is positively related to the education of the woman. So there's a direct relationship. I know somewhere from my review of literature, from the sort of results that I'm anticipating, that it will turn out to be positive. The hypothesis, the null will be true, but the validity at the beginning of your research study is yet unknown, is subject to testing. Thirdly, in most of the cases, a hypothesis specifies a relationship between two or more variables. So in line with that, we can just say that the prime functions that a hypothesis would serve would include providing a focus to the study, having to tell you what sort of data to collect, what sort of data not to collect. Also to have a hypothesis, also to have some sort of objectivity in a study. And a hypothesis may also enable you to add to the formulation of a theory. So what I'm trying to say is it enables you to conclude whether the sort of study that you're wanting to do is true or not, or whether it is true or false. So this is a basic background or theory of the hypothesis. Now let's come to practical application of hypothesis. Whenever I am deciding upon a hypothesis, there are certain things that I need to keep in mind, like that of objectives. There are certain things that I need to keep in mind. Number one, my hypothesis has to be simple, specific, and conceptually clear. मैं ऐसे undimensional hypothesis नहीं बोल सकती कि मैं hypothesis बना रही हूँ. The education may have a role to play in the income of women. May have नहीं बोल सकती मैं uncertain, conceptually incorrect, conceptually without no conceptual background, कोई hypothesis नहीं रख सकती. The hypothesis has to be simple, specific, and conceptually clear. So you may have more than 2, 3, 4 hypotheses. In one of the research PhD theses I came across, there were 108 hypotheses. So you could have as many hypotheses as you want, but they have to be very, very precise, very, very clear, and very, very concise. There is no place for ambiguity in case of while you're formulating hypothesis. Second, a hypothesis should be capable of testing. आपको universal fact नहीं hypothesis रख सकता है. So any hypothesis has to be open to testing. आपने कोई universal fact रख दिया तो वो तो established truth है ना, उसको तो आप टेस्ट नहीं कर सकते. It is not open for validation. तो ऐसा कोई universal truth को आप hypothesis नहीं रखोगे. Hypothesis has to be open to verification, testing, validity testing, etc. Thirdly, a hypothesis should be related to existing body of knowledge. हवा से hypothesis मत बना देना कि मेरा मन किया, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई सीरीज आती है, वो सीरीज को देख के, say American sitcoms, they have empowered women, and because women are empowered, their status in society is improved. This is just in there. There is no correlation, there is no evidence, there is no review. So whenever you're having a hypothesis, अपने review of literature Excel sheet दोबारा से टिक करो. Hypothesis का भी review of literature होना चाहिए. कोई say every word that you're writing in a research paper has to be backed by some sort of review. Has to be. Every word. I remember writing my first research paper
and my research guide putting question mark or every alternate word. Question mark, कैसे बोला? Question mark, कहाँ से आया? Question mark, कैसे कह सकते हो? Question mark, ये fact है. Question mark. Every word you're writing in your research paper is nothing of yours. It has to be backed by some sort of review, some sort of existing body of knowledge, some sort of literature. So anything you write your idea, because research is basically finding out something new, but it has to have some sort of existing literature. Remember, जब हम title choose कर रहे थे, हमें midway निकालना था. Unique title, but something which has an existing body of knowledge. Okay. Next, आपका hypothesis should be operationalizable. It means that it can be expressed in terms that can be measured. If a hypothesis cannot be measured, it can obviously not be tested. And if it cannot be tested, it obviously cannot be leading to a conclusion. So आपका hypothesis operationalizable होना चाहिए. You just can't have an hypothesis which cannot be operated upon, which cannot be worked upon. All right. Moving on to different types of hypothesis. तो आप सब इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से हो, आप सबको पता है कि दो तरीके के हाइपोथेसिस होते हैं. एक तो नल हाइपोथेसिस. इस नल हाइपोथेसिस इज समथिंग that we assume to be true. इस null hypothesis को हम research hypothesis भी कहते हैं. A very important mistake that you people do, a very common mistake that you people do, and a very important thing that you need to keep in mind. आपने null को test किया, null का alternate बनाया. ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं? null का alternate गलत बनाते हैं. Okay, I'll give you null. You people write alternate to that. Average age of women in my research area is 40. Average age of women in my research area is 40. इसका alternate बनाओ. Average age of women in research area is 40. Quickly, lunch के बाद सब सुस्त हो गए? कहाँ गया मेरा randomly selected sample who were responding? Please make alternative to this null hypothesis. The average age of women in my study area is 40. What will be the alternative? Average age of women in the research area is not 40. Okay. अब most of अच्छा एक और example लेते हैं. Average income earned by women is greater than 1 lakh a month. The average income earned by women is greater than 1 lakh a month. Alternate. Very good, Isa. It is less than or equal to 1. तो अब normally alternate क्या बनाते हैं लोग? Greater than 1, less than 1. Equal to 1 वाला कहाँ गया? तो always remember alternate बनाने के लिए आपको सारे के सारे possibilities you have to take into account, right? Okay, very good. Thank you for coming back, people. So there are two types of hypothesis: research hypothesis, which is also called a null hypothesis. Then we have alternative hypothesis, which is just the opposite of your null hypothesis. Now let's see what sort of hypothesis could be there. So we may have a research hypothesis with number 1, hypothesis of association. मेरा hypothesis जो है वो association explain कर रहा हूँ. For example, education leading to income, education leading to improvement in status of women, education leading to improvement in the role of decision making in women. Then hypothesis leading to difference. तो कोई जो difference बता रहा हो, say lesser education not leading to improvement in the status.
hypothesis leading to no difference, hypothesis leading to point prevalence. तो ये सारे टाइप ऑफ हाइपोथेसिस हो सकते हैं जो एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। एक छोटी सी एरर्स हैं जो हम करते हैं हमारे रिसर्च में while undertaking a research. आपने पढ़ा होगा type 1 and type 2 error. What is type 1 error? So, okay, before I start with this question, there are two things. Your null could be true, your null could not be true. Okay. जब भी आप errors explain करेंगे research because we are working on sample. Remember, जब मैं सैंपल पे काम कर रही थी मैंने अपने लिमिटेशन में पहले ही बोल दिया था कि सैम्पलिंग एरर हो सकता है। क्योंकि सैम्पलिंग एरर हो सकता है तो नल कुड बी ट्रू और नल कुड नॉट बी ट्रू और नल कुड सीम नॉट टू बी ट्रू। मैं नल को फॉल्स नहीं बोल सकती बिकॉज व्हेन आई से नल इज ट्रू एंड नल इज फॉल्स दैट आई एम कंपार्टमेंटलाइजिंग क्लियरली, आई एम सर्टेन कि या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। दूसरा तरीका है या तो ट्रू होगा या ट्रू नहीं होगा, मतलब ट्रू हो भी सकता है और फॉल्स हो भी सकता है एंड अनसर्टेनिटी भी हो सकती है। ओके, तो ईदर यू आर गोइंग टू यूज द टर्मिनोलॉजी फॉल्स एंड नॉट फॉल्स, ट्रू और नॉट ट्रू। ओके, तो या तो मेरा नल ट्रू होगा या फिर मेरा नल नॉट ट्रू होगा, या फिर मेरा नल एक्सेप्ट कर लिया जाएगा या फिर मेरा नल एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अगेन एक्सेप्ट रिजेक्ट नहीं यूज करते, रिजेक्ट डू नॉट रिजेक्ट यूज करते हैं, एक्सेप्ट डू नॉट एक्सेप्ट यूज करते हैं, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं ना हम गलती कर सकते हैं, हम सैम्पलिंग एरर कर सकते हैं, स्टैटिस्टिकल एरर कर सकते हैं। ये बहुत बार रिसर्च पेपर्स में हम जब रिसर्च पेपर्स पढ़ते हैं लोग गलती करते हैं, स्पेसिफिकली अंडर ग्रेड या अंडर के स्टूडेंट्स, कि एक्सेप्ट रिजेक्ट। एक्सेप्ट रिजेक्ट का मतलब है कि आप तो सर्टेन हो, और आप सर्टेन तब हो सकते हो या तो आप ज्ञानी हो, आपने पूरी पॉपुलेशन के साथ डील कर लिया है, या फिर आपका रिसर्च जो है वो फूल प्रूफ है। नो रिसर्च इन ह्यूमन साइंसेस इन ह्यूमैनिटीज इज फूल प्रूफ। Every research in humanities has a scope of opening up, because with every research you are doing, you are actually acting as a building block for other research works to be taken up. All right, तो accept reject नहीं करेंगे, accept do not accept, reject do not reject। तो मेरा null या तो true होगा या फिर true नहीं होगा, या फिर accept होगा या फिर accept नहीं होगा। अगर मेरा null true था और मैंने उसको accept कर लिया तो डिसीजन सही है या गलत है? अगर मेरा नल ट्रू था और मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, मेरा डिसीजन सही है या गलत है? मेरा डिसीजन सही है, करेक्ट है। नल ट्रू था, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। मेरा नल ट्रू था बट मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। मेरा नल ट्रू था पर मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। इज इट करेक्ट और नॉट? Type 1 error. What is the probability of type 1 error? False positive. Very good. What is the probability of type 1 error? Alpha. What is alpha? आप सब तो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के हो, अल्फा 1 माइनस अल्फा कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाया होगा। What is alpha? Alpha is level of significance. This is the probability that we are accepting that we could make a mistake. Statistical error मैं कर सकते हो, तो मैं तो अपने रिसर्च में मान के चल रही हूँ कि मैं अल्फा प्रोबेबिलिटी है कि गलती कर सकती हूँ। कोई चीज सही थी, मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं करी, मैं पहले से ही मान के चल रही हूँ कि मेरे से ये गलती हो सकती है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई अल्फा। ओके, मेरा नल ट्रू नहीं था, मैंने उसको एक्सेप्ट भी नहीं किया, करेक्ट डिसीजन, राइट? मेरा नल ट्रू नहीं था, मैंने उसको एक्सेप्ट भी नहीं किया, इज इट करेक्ट डिसीजन? यस, नल ट्रू नहीं था, एक्सेप्ट नहीं किया, करेक्ट डिसीजन। मेरा नल ट्रू नहीं था, एक्सेप्ट कर लिया, व्हाट इज इट कॉल्ड?
मेरा null true type 2 error. मैंने गलती करी, null true नहीं था, उसको accept कर लिया, type 2 error. Which of the two errors is most critical? People who are important question, people who are wanting to appear for net. One repetitive question. Why am I telling you that? Anyway, people who are willing to prepare for net. Repetitive question in your decades से आ रहा है. Which of the two tests is more crucial? Which of the two errors is most crucial? Type 1 or type 2? Which of the two? Type 2 error is more crucial. क्यों? Type 1 तो हम मान के चल रहे हैं हमसे गलती हो सकती है. Type 2 हमने अपने statistical study में कहीं पर भी incorporate नहीं किया था, कहीं पर भी scope नहीं छोड़ा था, पर हमसे गलती हो गई. ठीक है? So type 2 is more crucial than type 1. Donkey here से question आता है. Moving on. So these were the two types of mistakes that we do. अच्छा, एक important चीज जो हमें ध्यान में रखनी है, while making a hypothesis for qualitative study. जब मैं qualitative study के लिए hypothesis बना रही हूँ, try, ma'am, can you explain type 2 error? Yes. Okay, on the request, I'll just take up the type 2 error once again. So we have a hypothesis. We have kept a null hypothesis, which we are assuming to be true. So my null could be true. My null could not be true. I could accept my null. I could not accept my null. Okay. Then my null is true and I accept it. Correct decision. My null is true and I do not accept it. Wrong decision, called type 1 error. But type 1 error की probability is alpha. That is my level of significance. तो जब मैं t टेस्ट करती हूँ, जब मैं नॉर्मल टेस्ट करती हूँ, z टेस्ट करती हूँ, तो मैं मान के चलती हूँ, मैं अपना कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाती हूँ. कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए मैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस रखती हूँ. अल्फा इज माय लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस and I take into account that there is 1 minus alpha % probability that whatever testing I am done, it is seeming to be true, which means that there is alpha % probability that whatever research I am doing is seeming not to be true. Okay, तो alpha, तो type 1 error मैंने accept कर लिया, मेरी गलती है, probability है उसकी alpha. Next thing, my null could not be true and I do not accept it. My null wasn't true and I did not accept it. Correct decision. Null गलत ही था, accept भी नहीं किया. Okay. My null was not true, but I accepted it by mistake. My null wasn't true, but I accepted it by mistake. अगर मेरा null true नहीं था और मैंने उसको गलती से accept कर लिया, that is called my type 2 error. Type 2 error is more crucial than that of type 1 error because I had a room in my research study already for type 1 error. I already had accepted कि type 1 error कर सकती हूँ. Type 2 error के लिए मैंने कोई room नहीं छोड़ा था. क्योंकि type 2 error के लिए कोई room नहीं छोड़ा था, इसलिए type 2 error is more critical. Does that answer your question, Shafaq? Okay. Moving on. तो जब मैं क्वालिटेटिव रिसर्च कर रही हूँ, क्वालिटेटिव रिसर्च के जब हाइपोथेसिस टेस्ट करूंगी तो वो बहुत क्रिटिकली एनालिटिकल बनाने पड़ेंगे. क्यों? बिकॉज वन ऑफ द मेजर डिफरेंसेस in the qualitative and quantitative research is around the importance that you attach to the extent of the use of hypothesis while you undertake a study. So as you know, qualitative studies, they are characterized by emphasis on describing, understanding, and exploring using some sort of category or subjective measurement procedures. So constructing a hypothesis is neither advocated nor practiced in qualitative research. So in case if you are making any sort of hypothesis in qualitative research, the degree of specificity is obviously needed to test the hypothesis, which is not deliberately adhered to in qualitative research. So
testing of hypothesis in qualitative research, if not integrated properly, would actually be difficult and meaningless. Which does not mean that you cannot construct hypotheses in qualitative research. Of course, you can, but the non-specificity of the problem, as well as the methods and procedures to make the convention of how hypothesis will be formulated is less practicable and advisable in qualitative research. So while you are making hypothesis in qualitative research, you need to be little more careful. You need to be little more precise, little more context oriented while you are making hypothesis in qualitative research. So this was your step number, I can't recall, making a hypothesis. Moving on to next step, research design. Now, what is a research design? I'll give you a formal definition of research design, and then let me break it down for you for a simple understanding. Now, a research design is a plan, a structure, a strategy of investigation. So conceived as to obtain answers to research questions or problems. The plan is the complete scheme or program of the research. It includes an outline of what the investigator will do, from writing the hypothesis and their operational implications to do the final analysis of data. This was given by Kerlinger in 1986. So this was my formal definition of research design. अब समझते हैं research design है क्या? Research design is my blueprint. आप जब घर बनवाते हो तो नक्शा पास कराते हो, हमारे पास एक ब्लूप्रिंट है, कंसेप्चुअल मॉडल है कि मैं ये करूंगी. So I need to lead to D. A, B, C will be the variables. A will be taken care by alpha, beta, gamma. B will be taken care by theta. C will be taken care by epsilon. So all these will be integrated in these regression equations, leading to your final objective Z. So your research design is nothing but your conceptual model, as some of the researchers puts it across. So whenever you start with your research, सबसे पहले अपने दिमाग में एक conceptual model बना लो. जैसे मेरे दिमाग में clear है, मुझे टेस्ट करना है status of women. मैं उसके लिए variables ले रही हूँ 3: education, income, role and decision making. एजुकेशन को यहाँ से मेजर करूंगी, इनकम को यहाँ से मेजर करूंगी, रोल ऑफ डिसीजन मेकिंग को यहाँ से मेजर करूंगी. 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल पे मेजर करूंगी, लोगों से क्वेश्चन पूछ के. प्राइमरी डेटा लूंगी, इसका रिलेशनशिप पॉजिटिव आना चाहिए, इसका पॉजिटिव आना चाहिए, इसका पॉजिटिव आना चाहिए. देन ये वेरिएबल्स का आपस में रिलेशनशिप, इसका पॉजिटिव आना चाहिए, इसका पॉजिटिव आना चाहिए, इसका पॉजिटिव आना चाहिए. तो मेरे दिमाग में एक कंसेप्चुअल मॉडल, एक ब्लूप्रिंट, एक प्लान क्लियर है. दैट कंसेप्चुअल मॉडल, दैट ब्लूप्रिंट, दैट प्लान इज नथिंग बट माय रिसर्च डिजाइन. ऑलराइट, क्लियर है? क्लियर है? आपका रिसर्च डिजाइन 2 इंपॉर्टेंट काम कर रहा है आपको. एक तो कंसेप्चुअलाइज करने की करवा रहा है कि आपका ऑपरेशनल प्लान क्या होगा, क्या क्या प्रोसीजर्स होंगे. दूसरा, इंश्योर कर रहा है कि आप सारे प्रोसीजर्स को टाइमली, वैलिडिटी के साथ, ऑब्जेक्टिवली एक्यूरेट आंसर्स के साथ कर रहे हो, ताकि आपका जो रिसर्च क्वेश्चन है वो टारगेट हो जाए. मेरे पास पहले से कंसेप्चुअल मॉडल होगा, रिसर्च डिजाइन होगा, तो मुझे पता है, मेरे को हर स्टेप पे पता है कि मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना. नॉर्मली हम जो गलती भी करते हैं, नॉर्मली जो प्रैक्टिस है, ह्यूमन बिहेवियर है, मैं रिसर्च करना शुरू हुई, मैंने 10 रिसर्च पेपर डाउनलोड किए, 10 में से 9 रिसर्च पेपर में कुछ एक चीज तो होगी जो मेरे डेटा से रिलेटेड होगी, मेरे क्वेश्चन रिलेटेड होगी, और को 5 चीजें होंगी जो अलग ही होंगी. मैं पर्सनल एग्जांपल से समझाऊं, या if you allow me, I'll just try and explain you personal example with my personal example. Inflationary expectation के determinants पे काम कर रही थी.
तो डिटर्मिनेंट्स पे काम करना था, काम करते करते एक आया, वन ऑफ द वेरिएबल्स वाज मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। अब मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन 3 चैनल से होता है, क्रेडिट चैनल से होता है, बैंक चैनल से होता है। अब जब मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन के ऊपर रिसर्च करने लगी तो उसमें इतना खो गई कि मॉनेटरी पॉलिसी के चैलेंजेस, उसके इश्यूज, उसके सॉल्यूशंस, उसके प्रॉब्लम, that I wasted my 6 months on monetary policy transmission. Then one fine day I was scolded and I was taken aback by all the scoldings from my research guide that you're losing your focus. Then I realized my importance of my blueprint. मेरे पास कंसेप्चुअल मॉडल है, ब्लूप्रिंट है, तो मुझे ऐसे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। बहुत सारी चीजें होंगी जो आपको इंटरेस्टिंग लगेंगी। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल लिटरेसी एक वेरिएबल है। अब मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था? मेरा तो फाइनेंशियल लिटरेसी का इतना ही रोल था ना कि फाइनेंशियल लिटरेसी इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन को इनकलकेट करने में कितना हेल्प करता है। पर जब पढ़ने लगी तो बड़े इंटरेस्टिंग इंसाइट्स मिले। फाइनेंशियल लिटरेसी, आप किसी को फाइनेंशियल लिटरेट कैसे कह सकते हो, क्या पैरामीटर्स हैं, तो पहले उसको स्टडी करना है एक अलग काम, तो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। अगर आपके पास ये कंसेप्चुअल मॉडल है, आपके पास ये कंसेप्चुअल आउटलाइन है, ये ब्लूप्रिंट है, तो आप अपनी फोकस स्टडी करोगे। आपको पता है ये प्रोसीजर फॉलो करने हैं, इसी डायरेक्शन में जाना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। Although as a researcher what you can do is you can make another Excel, उसमें जॉट करते जाओ कि ये एरिया आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, ये रिसर्च पेपर हैं जो इस एरिया से रिलेटेड है, ताकि बाद में कभी कोई रिसर्च वर्क करना हो तो आप इससे रेफर कर सकते हो। बट कंसेप्चुअल मॉडल से, कंसेप्चुअल रिसर्च डिजाइन से हमारे पास एक कंट्रोल है, एक क्लियर लाइन ऑफ कंडक्ट है कि हम कैसे अपने रिसर्च को करेंगे। ठीक है, तो ये था आपका रिसर्च डिजाइन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्टेप, रिसर्च डिजाइन आइडेंटिफाई कर लिया कि क्या करना है, नेक्स्ट कम्स योर स्टडी डिजाइन। Now a lot of people may just ask you, what is the difference between research design and study design? कहने को कोई डिफरेंस नहीं है, बट एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। रिसर्च डिजाइन आपको ब्लूप्रिंट दे रहा है प्रोसीजर का कि आपको रिग्रेशन करना है। मेरे पास 3 ऑब्जेक्टिव्स थे, रिसर्च करना था, 3 वेरिएबल्स थे, उनको मैंने अपने ऑब्जेक्टिव्स में डाला। पहले ऑब्जेक्टिव में मुझे कोरिलेशन करना है, दूसरे ऑब्जेक्टिव में मुझे प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस लगाना है, तीसरे में मेरे को क्रस्कल वालिस टेस्ट लगाना है। मेरे पास पता है कि ये मेरे को ये प्रोसीजर है, ये करना है। स्टडी डिजाइन क्या बताएगा? प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस क्यों लगाना है, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस कैसे लगाना है, क्या आईजीएन वैल्यूज होंगी, क्या सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, क्या कोरिलेशन निकल के आएगा, किस तरीके का मैकेनिज्म है, कौन से कंट्रोल्ड वेरिएबल्स रहेंगे, कौन से इरेटिक वेरिएबल्स रहेंगे, सॉफ्टवेयर में कौन से कंट्रोल्ड वेरिएबल्स को कहाँ डालना है। जस्ट अ सजेशन मैम, in your coming workshop please have a session on 1 data, how to use your data, 2 how to use that data in your software. Very important thing, these 2 things are really important. मेरे पास डेटा है, मेरे पास थ्योरी है, बट मुझे वो सॉफ्टवेयर में यूज नहीं करना आता, यूजलेस। मुझे एक्सेल चलानी नहीं आती, मुझे एसपीएसएस चलाना, द मोस्ट सिंपल टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर एसपीएसएस चलाना नहीं आता, इंस्ट्रक्शन बेस्ड है। मुझे पता है कि ये डमी वेरिएबल है, पर मुझे ये नहीं पता उस डमी वेरिएबल को मेरे को कैसे यूज करना है, इंपॉर्टेंट है। स्टडी डिजाइन आपको ये सब बताएगा। रिसर्च डिजाइन आपको ब्लूप्रिंट दे रहा है कि आपको रिसर्च करनी कैसे है। स्टडी डिजाइन आपको ये बता रहा है कि उसको एक्चुअली में मॉडलिंग कैसे करनी है, उसको एक्चुअली में इनकलकेट कैसे करना है। Now, there would be differences in the way how you have study designs for quantitative and qualitative study. Now, differences in the philosophical perspective in each sort of paradigm, combined with the sort of aim that you have for a study, will have a focus on how you're going to define your study design. So now here comes the difference. The main focus in qualitative research is to understand.
explain, explore, discover, and clarify situations, feelings, perceptions, attitudes, values, beliefs, and experiences of a group of people. Hence, the study designs will be based on deductive methods rather than inductive logic. They will be flexible and emergent in nature. They will be more often non-linear, non-sequential in their operationalization. In this case, the study design will mainly entail the selection of people from whom the information has to be secured, what sort of inquiry there will be, whether it will be explored or gathered, what parameters will be there for the scope of a study, what information that you are going to gather through these methods and procedures, which will be often flexible and evolving. What sort of quality designs are you going to use, whether it will be structured, sequential, quantitative. Whereas in case of quantitative research, the measurement and classification requirement of the information that is gathered will have a proper study design which is structured, rigid, fixed, and predetermined in their use in order to ensure that there is accuracy in measurement and classification. I hope you understand the difference. I hope you understand the difference. The qualitative ones will be more flexible because we are dealing with the human behavior, and the quantitative one will be more rigid. Which of the two type of research studies will have a more flexible study design? Answer in the chat box. Which of the two? Qualitative will have more rigid or more flexible? Flexible. Qualitative will be more flexible, quantitative will be more rigid. Okay, moving on. तो अब बात करते हैं कि आपके स्टडी डिजाइन जब हम लेट्स कम बैक टू आवर क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्योंकि एज इकोनॉमिस्ट वी although qualitative research is a new area of coming up, and you will find it relatively easier to get your papers published when you are working on qualitative research these days, behavioral economics these days, again not that explored area. So but as an economist we try and quantify even the qualitative research. तो अगर मेरे को status of women जानना है, which obviously is kind of qualitative improve in the overall well-being, मैं उसको भी quantify कर रही हूँ. कैसे quantify कर रही हूँ? मैं education के बारे में बात कर रही हूँ, मैं income के बारे में बात कर रही हूँ. जब मैं role of decision making के बारे में भी बात कर रही हूँ, उसको भी quantify करने की कोशिश कर रही हूँ. ऐसे questions बना रही हूँ जिसको मैं 5-point Likert scale पे measure कर पाऊँ. ठीक है? So as economists, we actually land up doing everything in quantitative terms. So study design in quantitative research should have 3 important things. Number 1, number of contacts with the study population. Number 2, reference period of study. Number 3, nature of investigation. Longitudinal है, latitudinal है, retrospective है, prospective है. कौन से तरीके के डेटा को यूज कर रहे हैं? क्रॉस सेक्शनल डेटा को यूज कर रहे हैं और टाइम डायमेंशनल बेस्ड डेटा को यूज कर रहे हैं. ऑल्सो ये स्टडी डिजाइन मुझे ये बताएगा इवैल्यूएट करने के लिए कि मैंने रिसर्च शुरू करने से पहले ये एक्सपेरिएंशियल मेथड चूज किया था. रिसर्च स्टडी करने के बाद क्या मैं वो एक्सपेरिएंशियल मेथड से अपने कंट्रोल ग्रुप को कंट्रोल कर पाई हूँ या नहीं कर पाई हूँ. कर पाई हूँ तो कितने डिग्री तक कर पाई हूँ, और अगर नहीं कर पाई तो किस डिग्री तक नहीं कर पाई. आई होप दैट्स क्लियर. I hope that's clear. I'll give you 2 minutes to just think through this. This was a lot of information in last 10 minutes. Just try and assess, swallow, digest these concepts. 2 minutes for that.
हाँ जी, क्लियर? चले आगे। चले आगे। ओके, तो ये बात कर ली हमने स्टडी डिजाइन। स्टडी डिजाइन हमारे को एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल देता है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट टूल ये है कि आपने जब रिसर्च कर लिया, कंक्लूजन निकाल लिया, आपके पास कंपैरेटिव कंपैरिजन के लिए, कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए ऑलरेडी एक फ्रेमवर्क है कि ये हमारा डिजाइन था, हमने पैनल स्टडी करनी थी, हमने केस स्टडी करनी थी, हमने ओरल हिस्ट्री के बारे में बात करना था, हमने किसी के भी बारे में बात करना था, ये हमने करना था, और एट द एंड ऑफ द डे ये हमारे पास रिजल्ट्स निकल के आए। वेदर दीज रिजल्ट्स सर्व द पर्पस और नॉट, ऑल दिस taken care of, or all this can actually be explored using your study design. Two important things that need to be mentioned in your study design. Number one, whether your research is a participatory or collaborative research study. Two, whether your research is analytical or suggestive in nature. So these are the two important things that need to be there in your study design. Moving on to next step, selecting a method of data collection. Okay, क्या क्या मेथड है डेटा कलेक्शन के? हमने we had discussed the two types of data, primary and secondary data. Let's see हम प्राइमरी डेटा कैसे कैसे कलेक्ट कर सकते हैं. नंबर वन, ऑब्जर्वेशन. वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत बार क्या होता है कि आपको पता है कि आप डायरेक्टली जाके क्वेश्चन पूछोगे क्वेश्चन में, बहुत सारे लोग आपको जवाब ही नहीं देंगे. जैसे स्टेटस ऑफ वुमेन ही है, आपने जाके लोगों से पूछा, वुमेन से पूछा कि आपका डिसीजन मेकिंग में रोल क्या है, आउट ऑफ शेम, आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ अ लॉट ऑफ रीजंस, दे मे नॉट रिवील यू द ट्रू इन्फॉर्मेशन. आपने इनकम का डेटा पूछा, दे डोंट वांट टू रिवील देयर ट्रू इनकम. तो आप क्या करोगे इस केस में? आप जाके ऑब्जर्व करोगे. सो यू स्टे विद देम, यू स्टे अराउंड देम, एंड यू मेक एन ऑब्जर्वेशन अबाउट देम to analyze, to realize whether the data that has been given to you, is it true or not. So important चीज, आप ऑब्जर्वेशन से भी डेटा कलेक्ट कर सकते हो. दो तरीके की ऑब्जर्वेशन हो सकती है, पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन एंड नॉन पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन. पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन कुड भी आप उनसे बात करते रहो, उनके रिएक्शंस नोटिस कर लो. अगर आप उनसे बात नहीं कर रहे, डिस्टेंस से उनको देख के उनके रिएक्शंस को नोटिस कर रहे हो, उनके बिहेवियर को नोटिस कर रहे हो, दैट बिकम्स योर नॉन पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन. ठीक है, इंपॉर्टेंट वे ऑफ कलेक्टिंग योर डेटा, कलेक्टिंग योर प्राइमरी डेटा. पार्टिसिपेटरी मेथड, ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेटरी और नॉन पार्टिसिपेटरी. कुछ प्रॉब्लम्स हैं ऑब्जर्वेशन मेथड को यूज करने के डेटा कलेक्शन के. सबसे पहला, जब भी आप इंडिविजुअल या ग्रुप के बारे में बात करोगे, उनको पता है that they are being observed, they may change their behavior. Now, depending upon the situation, this change could actually be positive or negative. It may increase or decrease. And when a change in the behavior of person or group of people is there, when they know that they are being observed, that is called your Hawthorne effect. तो मैं स्टेटस ऑफ वुमेन के बारे में को असेस करने की कोशिश कर रही थी, रोल ऑफ डिसीजन मेकिंग को के वेरिएबल पे डेटा कलेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन कर लिया, वुमेन ने अपना एक्चुअली बिहेवियर चेंज कर दिया. लिमिटेशन ऑफ माय स्टडी, चेक बॉक्स. हॉथरॉन इफेक्ट, प्रॉब्लम है, हो सकता है क्योंकि मैंने पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन से प्राइमरी डेटा कलेक्ट किया है, तो हॉथरॉन इफेक्ट हो सकता है. दूसरा, जब भी मैं मेथड से ऑब्जर्वेशन मेथड से डेटा कलेक्ट करूंगी, देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ ऑब्जर्वर बायस. मैं किसी सेट ऑफ वुमेन को पसंद करती हूँ, मेरा उनकी तरफ बायस हो सकता है. किसी सेट ऑफ वुमेन को पसंद नहीं करती हूँ, सेट ऑफ वुमेन के फैमिली मेंबर्स को पसंद नहीं करती हूँ, देयर वुड बी अ बायस. तो ऑब्जर्वेशन बायस हो सकता है ऑब्जर्वेशन मेथड से. थर्डली, इंटरप्रिटेशन डिफरेंट हो सकती है फ्रॉम ऑब्जर्वर टू ऑब्जर्वर. जिस चीज को मैं हाफ फिल्ड देख रही हूँ, उसी चीज को आप हाफ एम्प्टी भी देख सकते हो. तो ऑब्जर्वेशन के लिए आप सर्टेनिटी से नहीं कह सकते कि ये डेटा सही है या ये डेटा यही मीनिंग निकाल रहा है. ऑब्जर्वर टू ऑब्जर्वर डेटा के नेचर भी चेंज हो सकता है. ऑल्सो
ऑब्जर्वेशन मेथड में एक बहुत प्रॉब्लम है कि देयर इज अ फुल पॉसिबिलिटी, द कंप्लीट पॉसिबिलिटी ऑफ इनकम्प्लीट ऑब्जर्वेशन और रिकॉर्डिंग। मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया ठीक से डेटा, मैंने नैरेटिव ठीक से नहीं दिया, मैंने किसी और को बोला था जाके ऑब्जर्व कर लो, उसने जाकर देखा कुछ, समझा कुछ और मुझे नैरेटिव कुछ दिया, तो मेरा रिजल्ट तो चेंज हो गया ना डिपेंडिंग अपॉन दैट। तो ऑब्जर्वेशन मेथड के ये लिमिटेशंस है। नेक्स्ट मेथड, इंटरव्यू मेथड, सबसे कॉमनली यूज मेथड है टू कलेक्ट द डेटा इंफॉर्मेशन फ्रॉम पीपल। मुझे पर्सनली लगता है सबसे इफेक्टिव भी है, because whenever you are interviewing a respondent, you as a researcher have the freedom to decide the format and content of the questions. You may have a pre-scheduled, formulated, pre-specified set of questions, or you may vary the question depending upon the other person. जैसे women के साथ deal कर रहे हो, not everybody will be educated, तो आपको उनको स्मार्टली उनसे पूछना पड़ेगा कि डिसीजन मेकिंग क्या है। आप बहुत सारे स्पेसिफिकली इन द विलेजेस इन द गुजरात एंड द राजस्थान रीजन, वुमेन आर नॉट एजुकेटेड, women are not earning income, but they are they're heading the families, they're taking all the decisions for the families. So आपको ऐसे वुमेन को अगर आप ये बोल दोगे कि आप एजुकेटेड ही नहीं हो, आपके पास इनकम ही नहीं है, तो आप डिसीजन मेकिंग में आप रोल कोई प्ले नहीं कर सकते, या आपका रोल रिडंडेंट है, तो दे विल बी टेकन अबैक। तो डिपेंडिंग अपॉन आपका रिस्पोंडेंट, यू विल हैव टू वेरी योर क्वेश्चंस आल्सो। So interview method में ये आपके पास flexibility होती है. So you may have a structured interview wherein you have a rigid interview schedule, rigid interview content, rigidity in the way how you're going to ask questions. Then you may have unstructured interview wherein you have the flexibility of interview content, structure, and the way how you're going to ask the question. अच्छा, अब यहाँ से एक बात आई, क्वेश्चन जब आप इंटरव्यू ले रहे हो तो आप, मैं बार बार क्वेश्चन के बारे में बात कर रही हूँ। दिस सेट ऑफ क्वेश्चन इज कॉल्ड क्वेश्चनेयर। ये क्वेश्चनेयर आप मेल भी कर सकते हो, ये क्वेश्चनेयर आप किसी और से भरवा भी सकते हो, ये क्वेश्चनेयर आप उनके बिहाफ पे भी भर सकते हो। तो ये जो क्वेश्चनेयर है, इसके बीच में इम्पोर्टेंट, जब भी आप क्वेश्चनेयर बनाओगे, लेट्स कम बैक टू हाउ वी एक्चुअली कंडक्ट स्टडी। जब आप प्राइमरी डेटा में स्टडी कंडक्ट कर रहे हो, कुछ चीजें आपको दिमाग में रखनी है क्वेश्चनेयर बनाते हुए। सबसे पहला, नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है। मुझे पता है कि मैं इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन पे लोगों से क्वेश्चन पूछ रही हूँ, लोग अपने एक्चुअल एक्सपेक्टेशन बताएंगे ही नहीं। लोग बताएंगे ही नहीं कि उनको लगता है प्राइसेस बढ़ रहे, क्योंकि दे आर हेजिटेंट। लोग अपने इनकम बताएंगे ही नहीं। तो मुझे किस तरीके से उनसे इनकम पूछनी है, मुझे किस तरीके से उनके एक्सपेक्टेशन पूछनी है, मुझे किस तरीके से उनकी एजुकेशन पूछनी है, वो क्वेश्चनेयर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि मेरा नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ एरिया। योर क्वेश्चंस में वेरी फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया। थर्डली, आपकी स्टडी पॉपुलेशन क्या है। अगर बहुत इलिटरेट है पॉपुलेशन, बहुत यंग है या बहुत ओल्ड है, हैंडीकैप्ड है, तो हमें पता है कि मेल्ड क्वेश्चनर से कुछ नहीं होने वाला। हमें पता है कि क्वेश्चनर उनको पकड़ाने से कुछ नहीं होने वाला। तो हमें एक इन्यूमरेटर चाहिए ही चाहिए उनके बिहाफ पे क्वेश्चन भरने के लिए। हमें एक इन्यूमरेटर चाहिए जो उनसे फ्रेंडली वे में बात करे, जो उनसे बातों में इस तरीके से उनकी क्वेश्चन, इस तरीके से उनसे बात करे कि जो हमारे क्वेश्चनर में क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन को वो एड्रेस कर पाए। तो हमें इन्यूमरेट, तो किस तरीके की हमारी टारगेट पॉपुलेशन है, टारगेट सेट है, उसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा क्वेश्चनर कैसा होगा और किस तरीके से हम उस क्वेश्चनर को भरवाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो थे हमारे चैलेंजेस इन इंटरव्यू मेथड। एडवांटेजेस क्या है, बहुत ही एप्रोप्रिएट होता है कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में, जहां पे सेंसिटिव क्वेश्चंस पूछने होते हैं, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस पूछने होते हैं, वहां पे आप क्वेश्चनर भेजोगे, कभी आंसर नहीं आएगा। सेकेंडरी डेटा से डेटा लोगे, डेटा फैब्रिकेटेड होएगा। जो सेंसिटिव एरिया है वहां पे डेटा कभी कभी मिलेगा ही नहीं। तो ऐसी चीजों में इंटरव्यू सबसे रामबाण इलाज, इंटरव्यू मेथड से आप डेटा कलेक्ट कर लो, सबसे सही इंटरव्यू का। One, it cannot be questioned also, so it provides substance again to your research study.
जस्ट अ टिप, पीएचडी करना चाहते हो, रिसर्च करना चाहते हो, ज्यादा से ज्यादा प्राइमरी डेटा से डील करो. जितना ज्यादा प्राइमरी डेटा से डील करोगे उतना ज्यादा सब्सटेंस आएगा. यू विल गेट रॉ फिगर्स, यू विल बी एबल टू हैव मोर मीनिंग. ऑलवेज बैक योर प्राइमरी डेटा विद योर सेकेंडरी डेटा. हर प्राइमरी डेटा के पास सेकेंडरी डेटा का बैकअप होना चाहिए. अगर सेकेंडरी बैकअप नहीं है, प्राइमरी डेटा का कोई एसेंस नहीं है, दैट जस्ट नंबर्स. सो यू शुड हैव दैट. सेकेंड, इंटरव्यू मेथड का एक और फायदा, इन डेप्थ इंफॉर्मेशन मिल जाती है. इंटरव्यू मेथड से डेटा कलेक्ट करोगे, कर रहे थे रिसर्च स्टडी वुमेन के स्टेटस पे, आपके पास आपको और 10 स्टडी के लिए डेटा मिल जाएगा. आपने एक बार मेहनत करी, 10 रिसर्च निकाल सकते हो उससे. तो प्राइमरी मेथड, इंटरव्यू मेथड से बहुत तरीके के डेटा इकट्ठा हो जाता है. सेकेंड, इंफॉर्मेशन कैन ऑब्वियसली बी सप्लीमेंटेड. सीधा सीधा एक्शन, सीधा सीधा सवाल पूछोगे, जवाब नहीं मिलेगा. घुमा के पूछोगे, मिल जाएगा, क्योंकि आप 1-to-1 इंटरेक्शन कर रहे हो. कभी कभी लोगों को क्वेश्चन समझ नहीं आता, एक्सप्लेन कर सकते हो. तो इसलिए ज्यादा वाइडर एप्लीकेशन है. हर तरीके के लोगों के साथ आप इंटरव्यू मेथड को यूज कर सकते हो. मेजर डिसएडवांटेज ऑफ इंटरव्यू मेथड, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, एक्सपेंसिव है in terms of time, in terms of effort. Quality of data will depend upon the quality of interaction. कभी कभी people are not open to interaction. अगर interaction ही नहीं करेंगे तो आप उनसे डेटा कैसे कलेक्ट करोगे? So there could be a problem over there. बहुत बार quality of data is also dependent upon the quality of the interviewer. The enumerator may not have that experience, skill. उसने सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा, जवाब नहीं दिया, नो आंसर, नो अनसर्टेन. तो आपका इंटरव्यूअर के पास भी वो स्किल होना चाहिए कि वो लोगों से बात करके उनसे इंफॉर्मेशन निकलवा सके. वो भी एक डिसएडवांटेज है. Then quality of data may actually vary from where, how and when are interviews taken. तो status of women एक साल पहले, कोविड से पहले अलग होगा, कोविड में अलग होगा, कोविड के बाद अलग होगा. तो किस टाइम पे आप इंटरव्यू यूज कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल, मेरे हस्बैंड से लड़ाई हुई है, मुझे कल कोई आके बोले रोल एंड डिसीजन मेकिंग, मैं सीधा बोल दूंगी कि नहीं भाई, कोई रोल नहीं है, मेरा सुनता ही नहीं है. राइट? इस तरीके के प्रॉब्लम आप एक्चुअली इनकाउंटर करोगे जब आप प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने जा रहे हो. लोग फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, लोग इरिटेटेड होते हैं, लोग आपको जवाब नहीं देना चाहते. तो ये एक मेजर डिसएडवांटेज है. समटाइम्स इट बिकम्स सो टाइम कंज्यूमिंग, सो फ्रस्ट्रेटिंग, सो एफर्ट टेकिंग that you tend to lose your interest only to collect the data. So all these are your disadvantages of interview method. Important disadvantage, the interviewer may have a bias. मेरा हमेशा bias तो रह ही सकता है interview method में. Quickly jot down 3 advantages and 3 disadvantages of interview methods of data collection. Three advantages and 3 disadvantages of interview method. It seems that the interest is following a downward curve now. Advantages: convenient, easy, in-depth information can be found out. In disadvantages: expensive, effort-taking, and time-consuming. Thank you, Siddhant. Anyone else would like to add on to that? All right, so I'll move on to the secondary methods, try and wrap it up quickly. जब भी आप सेकेंडरी मेथड्स के बारे में बात करोगे, 4 तरीके के एरियाज हैं जहां से आप सेकेंडरी डेटा ले सकते हो. सबसे पहले गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन से डेटा ले सकते हो. दूसरा, पहले के जो एग्जिस्टिंग रिसर्च है उनसे डेटा ले सकते हो. तीसरा, पर्सनल रिकॉर्ड्स, इलेक्टोरल पोल, वोटर आईडी ऑफिसेज, आधार, यूआईडी नाउ.
इन सबसे डेटा ले सकते हो। फोर्थ, मास मीडिया से डेटा ले सकते हो, न्यूज़पेपर से, मैगजीन से, इंटरनेट से, ब्लॉग से डेटा ले सकते हो। सेकेंडरी डेटा के साथ डील करने में मेजर प्रॉब्लम, सबसे पहले वैलिडिटी, रिलायबिलिटी हमें नहीं पता क्या है, तो जब भी हमें वैलिडिटी या रिलायबिलिटी करना होगा तो उसका टेस्ट करना पड़ेगा। दूसरा, पर्सनल बायस हो सकता है, जिसने डेटा कलेक्ट किया उसका क्या ऑब्जेक्टिव था, उसने किस तरीके से डेटा कलेक्ट किया होगा, अब हम उसके डेटा को यूज कर रहे हैं। अब मैंने डेटा कलेक्ट किया तो मेरे डेटा में मुझे पता है कि मेरा क्या ऑब्जेक्टिव था, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए और किस तरीके से रिस्पॉन्सेज आए। सेकेंडरी डेटा का प्रॉब्लम ये है कि आपने मेरा डेटा लिया, आपके पास तो सिर्फ नंबर्स है ना, आपके पास तो सिर्फ वही है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मेरे पास है, तो सेकेंडरी डेटा में ये प्रॉब्लम रहता है। thirdly, availability of data may not always be there. fourthly, format, डेटा का फॉर्मेट भी अलग अलग होता है। तो बहुत सारे ये सेकेंडरी डेटा में इश्यूज आते ही हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज जो हमें दिमाग में रखनी है जब हम प्राइमरी डेटा से क्वेश्चनर बना रहे हैं, सबसे पहले आपका क्वेश्चनर की टेस्टिंग होनी चाहिए। दो तरीके की टेस्टिंग इम्पॉर्टेंट है। नंबर 1, फेस वैलिडिटी, 2, कंटेंट वैलिडिटी। ये दोनों तरीके की वैलिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप कोई क्वेश्चनर बना रहे हो, कोई स्टैंडर्ड बेंचमार्क क्वेश्चनर अडॉप्ट कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, अडॉप्ट कर लो। किसी ने आरबीआई यूज करता है कोई क्वेश्चनर, IMF यूज करता है, वर्ल्ड बैंक यूज करता है, ये सारे प्री या सर्वे बेस्ड मेजर्स हैं, वो क्वेश्चनर यूज करते हैं। क्वेश्चनर मिल गया, उसको यूज करो, नो इश्यूज। अपना क्वेश्चनर बना रहे हो तो उसकी कंटेंट एंड फेस वैलिडिटी टेस्ट जरूर कर लेना। फेस वैलिडिटी का मतलब है एक्सपर्ट्स जो हैं उस एरिया में, कम से कम 2 या 3 एक्सपर्ट्स को अपना क्वेश्चनर भेज के उनके कमेंट्स ले लेना। कंटेंट वैलिडिटी के टेस्ट होते हैं, हर सॉफ्टवेयर में वो टेस्ट अवेलेबल है, वो टेस्ट कर लेना। अगर टेस्ट के वैल्यू सही आ गए तो आपका क्वेश्चनर वैलिड माना जाएगा। क्वेश्चनर ही अगर वैलिड नहीं है तो आपका जो रिसर्च स्टडी है वो काउंट ही नहीं होगी। ठीक है। Important things while you make a questionnaire that you need to keep in mind. Number 1, open ended questions मत रखना क्वेश्चनर में, बहुत प्रॉब्लम होता है। आपने किसी पूछ लिया व्हाट इज योर इनकम, डेटा कोई कोलेट करते मर जाओगे, कहाँ कोलेट करोगे, कहाँ रिप्रेजेंट करोगे, कैसे प्रोजेक्ट करोगे, इट विल बी अ ह्यूज मेस। State your income, give them the options under this, between this and this. Can you explain how to test a questionnaire? So we have questionnaire को test करने के लिए validity and reliability tests होते हैं. So you can take over those validity and reliability tests, and based on those validity and reliability tests, you can test the questions. Okay, you can test your questionnaire. हर question के values आते हैं, and based on that value, there's a full, I can conduct a full workshop on how to test the questionnaires. So it's a huge area which can be explored. So coming back to important pointers in the questionnaire. Open-ended questions mat rakhna. Questionnaire should not project any type of political philosophy. किसी भी political ideology को, philosophy को promote नहीं करना है आपके question में। किसी भी माइनॉरिटी ग्रुप को ऑफेंसिव स्टेटमेंट्स नहीं देने हैं आपको। किसी माइनॉरिटी ग्रुप, मेजॉरिटी ग्रुप, किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को आपको ऑफेंसिव स्टेटमेंट्स नहीं देखने। ऑब्जेक्टिविटी आपको रखनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपने एथिकल ग्राउंड्स को इंटैक्ट रखना है व्हाइल मेकिंग अ क्वेश्चनर। ओके, अगर आप क्वेश्चनर बना रहे हो तो every question in your questionnaire should have a minimum of 3 review of literature. हर क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन है, 60 पेपर होने चाहिए उस क्वेश्चनर को इलिसिडेट करने के लिए। हर क्वेश्चन के लिए कम से कम, मैंने अगर क्वेश्चन बनाया that crude oil how far do you think crude oil can impact inflationary expectation or inflation, मेरे पास 3 रिसर्च पेपर होने चाहिए जो ये बात बोले कि क्रूड ऑयल एक्चुअली इन्फ्लेशन को इम्पैक्ट करता है। मैं मिनिमम बोल रही हूँ, इससे ज्यादा हो, जितने ज्यादा हो उतना अच्छा, मिनिमम तो 3 होने ही चाहिए। तो ये था अबाउट क्वेश्चनर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्टेप, राइटिंग अ रिसर्च स्टडी, राइटिंग अ रिसर्च what do you call it? Research statement, research report.
मैंने टाइम एंड अगेन अलग अलग स्टेप्स पे आपको एक्सप्लेन किया है कि कहाँ पर क्या आना चाहिए, ठीक है, कहाँ पर क्या आना चाहिए, आपको हर स्टेप पे एक्सप्लेन किया है कि इसका क्या आएगा, इसका क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव्स आने चाहिए, रैशनल आना चाहिए, फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर आना चाहिए, फिर रिसर्च डिजाइन, फिर स्टडी डिजाइन, फिर मेथोडोलॉजी, फिर कंक्लूजन्स, फिर लास्ट में आपके रिजल्ट्स। इंपॉर्टेंट चीज जो आपके रिसर्च स्टडी में होना ही चाहिए, रिसर्च रिपोर्ट में होना ही चाहिए, 2 वीकनेसेस लिमिटेशंस, 3 रोड अहेड वे अहेड। नॉर्मली लोग ये नहीं लिखते हैं, दोनों ही चीजें नहीं लिखते हैं, ना लिमिटेशन लिखते हैं ना वे अहेड लिखते हैं, और यही 2 एरियाज हैं जो इंटरव्यूज में पकड़े जाते हैं। अगर आपने अपने सीवी पे लिखा है कि आपने कोई रिसर्च प्रोजेक्ट किया है और आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, नो द वीकनेसेस, नो हाउ कैन दिस वर्क बी एक्सटेंडेड, रिसर्च एमफिल किया है, पीएचडी किया है, नो व्हाट आर द वीकनेसेस ऑफ योर एमफिल पीएचडी, know how and where can you explore it further. So these are important. Bibliography is very very important. हर चीज का bibliography होना जरूरी है. As I mentioned, every word in your research paper should have to have a review. तो उन सब की लिस्ट एक साथ बनाने की कोशिश मत करना, कंटिन्यूसली साथ के साथ ही बनाना, और लास्ट में वो सारा का सारा लिस्ट जो है वो लिख देना. इफ पॉसिबल कहाँ पर यूज हो रहा है वो रिव्यू वो भी लिख दो तो बहुत ही अच्छी बात है. नहीं लिख सकते तो जस्ट इंडेक्सिंग करके उसको लास्ट में बिब्लियोग्राफी में लिख दो. सो दैट वाज ऑल फ्रॉम मी. आई एम ओपन टू टेक अप क्वेश्चंस नाउ. Shall I give you 5 minutes to just think about it? And then we can take up questions.
Siddhant, so there's somebody who talked about, ma'am, we talked about Hawthorne effect. Can you please highlight a little bit and difference between the study design and research design? Okay. Hawthorne effect is a change in behavior that I may have because I know I am being observed. For example, you ask me, I may take up a lecture in one way. Okay. I may be a little more casual, a little more friendly. I may be using a jargon that you as a student or as a young group of people use. Okay. But when I know there's somebody who's observing my actions, there's somebody who's trying to observe the way how am I teaching, I will always avoid to use that jargon. So a lot of times the connect between the teacher and the student may not go beyond a certain level, which it could if you are in an unobserved environment. That's called Hawthorne effect. So while you give feedback about me as a teacher, you may not give that amazing a feedback which you could have. So basically, all I'm trying to say is with Hawthorne effect, if a person is if a participant is being observed, then the behavior it shows is a little different, and a lot of time the real result, the real potential, the real ability, the real impact may not be realized. I hope that helps. Hawthorne effect. Next thing is difference between study design and research design. Research design is conceptual model. ABC leading to alpha, alpha leading to beta. ABC को measure करने के लिए XYZ वेरिएबल, A को measure करने के लिए XYZ, B को measure करने के लिए PQR, C को measure करने के लिए LMN, ये वेरिएबल. एक theoretical model, conceptual model. स्टडी डिजाइन में आप एक्चुअली में कौन सी मेथोडोलॉजी यूज कर रहे हो, स्टडी डिजाइन में आप एक्चुअली में कौन सा मॉडल यूज कर रहे हो, स्टडी डिजाइन में आप एक्चुअली में कौन से वेरिएबल्स लोगे, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करोगे, कौन सी मॉडलिंग करोगे, उसके लिमिटेशंस क्या होंगे, वो सब जो एक्चुअल रिसर्च डिजाइन में आप एक ब्लूप्रिंट दे रहे हो, स्टडी डिजाइन में आपने वो जो गैप्स क्रिएट किए हैं, उन ब्लूप्रिंट के जो डायरेक्शन है, जो फ्लो चार्ट है, उन फ्लो चार्ट्स को फिल इन कर रहे हो कि आप कैसे ये ए बी को लीड करेगा. स्टडी रिसर्च डिजाइन में आपने बोला ए बी सी जेड को लीड करेगा. अब ए बी सी कैसे रिलेटेड है, ए बी से कैसे रिलेटेड है, बी सी से कैसे रिलेटेड है, और वो एक्चुअली में जेड को कैसे इम्पैक्ट करेगा, ये आएगा आपका स्टडी डिजाइन. Does that answer your question, Siddhant? All right, let's go little. Farah, earlier you asked that how will I be measuring the awareness of financial incentive? Okay, Farah, you will be measuring your financial incentive by these 5 things, maybe tax deduction, road tax exemption. Just try and look at it from literacy point of view also. Now, a lot of time there are a lot of financial incentives available, but a lot of people are not even available, are not even aware of those incentives. So if I have to bifurcate the population, then there is a population. You can first bifurcate in terms of educated, not educated, literate, not literate. Then somebody may be literate, may not be financially literate. So financially literate, not literate. Somebody may be financially literate, but not financially aware. So when you're talking about financial incentives, then you will have to mention in your research design that the target population that you are targeting is financially literate, is financially aware also. Please keep that also in mind. And mention that how are you measuring the incentives. Ma'am, if let's say our target research group is a minority and are very much unwilling to respond and we have very less budget or less.
So now this, Aditya, I told you this is a problem. So a lot of time there are sensitive areas where people would not want to answer. There are sensitive areas where people will not reveal true information. In that case, non-participatory observation will be a solution. There is just one way how you can collect the data in these cases, that is non-participatory observation method. And this is a very good topic that you just mentioned. You can actually apply for a research project, look for research project alternatives available, and go for research project from ICSSR. Maybe your university may also be funding. So in such cases, how you go about it is that you have a research problem, you have a research proposal, and then you give it to a research organization which is going to finance it. You cannot do it in an elaborate manner at an individual level. I totally get the sort of problems that you may be encountering. Most of the people will not actually be revealing true information. One, they will be hesitant. Two, even if they are open to communication, they wouldn't have been revealing the true information. So one of the mechanisms is to actually stay with them for some time and observe their behavior, which may not always be true. Then you may actually visit them on a more frequent basis and from time to time. So one round of data collection will not be enough. You will have to go and collect data from time to time in this case. Cochrane formula. Somebody asked, Shafaq asked, ma'am, which formula should we use in order to identify the sample size? There are a lot of formulas available in the literature, statistical literature. The most commonly used formula is the Cochrane formula for finite population and for infinite population. It's very simple to apply also. And if you Google, you have the calculator also. You just need to put in your population size. They will calculate the sample size for you. But although there are other formulas also that you can actually take, but the economics researchers, they generally use Cochrane's formula. It is very popular among the economics research. Anything else? Pooja ma'am, would you want to say something? I think I'm through with it. There are no more questions coming in. Anything else you want me to discuss? Nothing else, everything understood. Thank you, Farah. Thank you, Aditya.
Let's wait for Pooja ma'am to turn up. Anyway, I'll give you 20 questions, which will be MCQs, very easy. Please prepare for them. Yes, ma'am. Are we done with the session? Yes, ma'am, we're done with the session. We've taken up the questions also. Okay. So do students have any doubt? They want to ask something? There have been questions that I've been taking up. Okay. So let's So- wait for 5 more minutes if somebody wants to ask something more. All right. Students have asked a good question. They have understood in detail about, because they have gone through all this process. So now with your session, they got the, in-depth knowledge about where they are, where there is a lapse and how they can connect. Yeah. I just hope it helped them somewhere. No. So I got a feedback that if this session happens beforehand, then it would be really great for their, dissertation. Actually, they've already given their dissertation. Okay. Yes. Master students must have given this dissertation. Yes. So in the chat box also, they have written, in detail about the kind of issues they are facing and with respect to the session that you have taken and how they can proceed, how they can improvise on their research. I just hope now it is of some help so that they can actually extend the sort of research. So there is no end to research. Right. Even when you do your PhD, it's just the beginning of your research career. Yeah, absolutely. Just give me a minute. Yeah, sure. A break for 15 minutes and then you can give them the assessment. That's okay, ma'am. I'll just give you a call. I have some questions to ask about assessment. I'll take a break from here.
All right. All right.